Hello. Yeah, good evening. Very good evening. Can you hear me? Most welcome to the online platform. Hello. Am I audible to you all? Yes, ma'am, you are audible and Okay, visible thanks. too. Thanks. Thanks. Just wait for a few minutes. We are doing live. Okay, sure.
Uh, yes, sir. But also, am I audible? Yes, you are audible. Okay. So, very good evening to all the respected participants. Welcome to the online platform of Just Agriculture. Today, we are going to start our fourth day of the session of the National Training Program. So, the first speaker of the day, Vinita Kumari ma'am, is joined us. Ma'am, can you hear us? Yes, I Vinita can. ma'am? Dr. Yes. Piyush. Yes. Very good evening, ma'am. Welcome to you on the online platform of Just Agriculture. We are highly delighted to have you here with us to uh, have you. So, participants, before inviting ma'am, I would like to give a small brief introduction about our ma'am. Dr. Vinita Kumari ma'am is the Deputy Director in Manage Hyderabad. And as an agri-business expert, she is wielding rich experience of more than a decade in a startup ecosystem, business development, business incubator management, and technology commercialization. With her prior experience working in the World Bank, technical commercialization, and NABARD incubators, and now leading the IRI ecosystem of entrepreneurship as lead innovation expert. Ma'am is having a multiple certificates and honors, including the Best Incubator Award by the Ministry of Farmers, Government of India, Women in Business Award, Appreciation Award by the NABARD itself. And ma'am mission is for the foster of incubation ecosystem in the India and enable the growth of innovative and impactful agripreneurs. Ma'am is having a successful generated leads launch public and private partnership, advise state government in CSI initiatives, and helps establishing the seven business incubator plan all over the India. Ma'am is also contributing to the establishment of 50 plus successful startups brands in the agribusiness sectors, socially impact hundreds of living and has represented India Business Incubator as an invited speaker in Europe, Hong Kong, and published a various number of books, book chapter, research papers, and a number of articles. Ma'am is also having a certificate of soft skill experts and annual level and passionate photographer, and also having experience and finding the peace in the taking up new initiative facing the game up to the action and results. So it was a brief introduction of our honorable speaker of the first session of the day. So over to you, ma'am. Unita, ma'am, please. Thank you, Dr. Piyush. But I think I need to reintroduce myself because I think you might have read some other speaker's bio. That's not was mine. So let me introduce briefly about myself. So I am Deputy Director, Gender Studies, uh, heading the Center for Gender in Agriculture, Nutritional Security and Urban Agriculture here at the National Institute of Agriculture Extension Management, that is we call as manage at Hyderabad. So basically we work on capacity building of officers in agriculture and allied sectors, and also we are the implement knowledge and implementing partners of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. And so we are working in the implementation of the ministry schemes. We are the knowledge partners and policy recommendations we suggest to the ministry. We do action research. So when I'm heading the Center for Gender and Nutritional Security and Urban Agriculture, my four areas of specialization revolves around gender, women empowerment, women in agriculture, food and nutritional security. I talk about nutrition sensitive agriculture. I also work on family farmer, one health concept. Urban agriculture. These are few of the areas of biofortification, some of the areas on which I specialize. And today I'll be talking about the challenges and opportunities of women-led startups. So because we know that uh, uh, our Prime Minister is more supportive of Skill India,
Startup India. So these are some of the government encouragement that is leading a revolution in India towards startups. Otherwise, earlier everybody was wanted to be a job seeker. Everybody was getting educated to get some good job, well-paid job, or even if it is not a well-paid, any something job they used to look for. But only when these type of concepts have been promoted in India and well supported by our government, that these type of revolution has come up in the startup and also, so that's why as I mentioned that I work on gender and women empowerment and all. So my interest is here to talk about women led agri startups. So what are their opportunities and challenges in agriculture and allied sector? So since I am working in agriculture sector, so my focus will be towards director in agriculture and allied sectors. So before I head on to my presentations, we'd just like to give a very quick introduction about it, that how we have seen just as I mentioned that there is a revolution of Startup India, Skill India, and these are entrepreneurship development and all. So this has also been promoted at a next level because of the digital revolution also that has happened. Because of this digital revolution that has come in, so all these marketing and branding, selling, buying, procuring raw material, selling the financial is becoming very easy for the entrepreneurs, for the startups, for them. So here in agriculture, we have a agriculture sector, we have women at one end, and also we have to tap the potential of the digital world for our women startups, women entrepreneurs. So in that perspective, here you have to understand that our women farmers are contributing to agriculture and allied sectors in very clear way, that a lot of activities, whatever we see the activities that are women farmers oriented activities, and they are contributing significantly in that we all are well aware of. And because of that, they also have a significant contribution towards food security, nutrition security. These are the other things. We are promoting sustainable agriculture. Sustainable agriculture, natural farming, climate smart, resilience towards climate smart. So women has a greater contribution in all these areas, because we all know that even when we talk of climate smart agriculture or climate resilient agriculture, so gender is one very important. So where they are very much linked. So these are some of the points which I just want to bring here to make you understand that how women are not only directly contributing on the farms by being a farmer or being a producer, but they are contributing significantly towards the latest trends that are being promoted in India in agriculture sector, and that is where sustainable agriculture and entrepreneurship, food and nutrition security, nutrition sensitive agriculture, all these have direct association with gender. And where we talk of gender, it is both men and women, but our concern mostly revolves around women, because they are the ones we still need to support and do a lot of support, extend a lot and hand holding mentorship to them, so that they can move further in their journey, and they can get a decent place as compared to their other competitors or the men folk in the same space. So when we are talking of the rural entrepreneurship, women rural entrepreneurship in agriculture, we all know that there are a lot of avenues now. Primary agriculture, secondary agriculture is there. So in primary agriculture, secondary agriculture, lot of such avenues are there where women farmers can be transformed into women entrepreneurs. And our purpose, our objective is to transform our women farmers into women entrepreneurs. They should not just be limited to
remain as a small or a marginal farmers with growing something for sustainable agriculture as a for sustainability of their family food needs, but also they should learn how to sell their excess or surplus produce, and by adding more value to it so that to get better price for it. So this is where rural entrepreneurship among women is where a lot of organizations, agencies, government, public, private, all are working towards that. FPO is one such thing where through which entrepreneurship among women is also being promoted. They are getting um, opportunity to um, um, get the benefit of the collectivization and approach through FPOs to get a better price for their small meager produce that they have. So if we look at the from the Ministry of Small Medium Enterprises, because we are talking of entrepreneurship opportunities for women startups. So according to the data of Ministry of Small Medium Enterprises, micro, small and medium enterprises, we see that almost 63 million of the whatever the enterprises are there in rural sector. 63 million of them, that is almost 20%, are women owned. That is around 22 to 27 million, and majority of these are of the micro, small and medium nature. So they does not have operate at a large big enterprises. They usually have a micro or a small, medium also very less. Majority of them end up as a micro or a small entrepreneur, which we need to work on. That we have to raise the bar for our women entrepreneurs, that they should not just be there as an informal entrepreneurs or operate at a very small, very low level, but rather they should be uplifted to upscale their entrepreneurship, to strengthen, to expand, to diversify their entrepreneurship. And India is ranked 57th among 65 countries on the Mastercard Index of Women Entrepreneurs. So according to the 2021 data, our country ranks at 57th position among 65 countries. That itself is a, something that tells us that why women-led agri startups, women-led enterprises need to be supported, need to be hand-holded, mentored, because we have seen that mostly they operate at micro and medium level, and India ranks very poor in the index for of women entrepreneurs as well. So if we support, if we mentor, if we encourage our women entrepreneurs, so to raise from micro and small level to a medium and a larger big enterprises. So if we do this much of some active work activities towards them, it is going to create more than 30 million women owned enterprises that may in turn have a potential of providing opportunities, job opportunities to almost 150 to 170 million. So because we will be seeing in the subsequent slides that why women are operating at the micro and small level mostly, and what are the characteristics, features of that, and what negative impacts, or what how does it impact on their entrepreneurial journey. So here we see that 90% of the women participate in any formal and paid work, or only 19% of women are into paid work, formal and paid work. Mostly they are in informal, unpaid work. Whatever they will do, whether at home, at farm, on farm, off farm, mostly it is considered as a family labor. So being say, contributing as a family labor, they are not a paid member, considered or counted as a paid member of this community, society, and that is where their contribution is also diluted. And also according to the Global Entrepreneurship Monitor, so women's total early stage entrepreneurial activity shows that they are often high in low income countries, means wherever
the countries who are poor or underdeveloped, there you will see that more of the women enter into entrepreneurial activity at a very early stage. At an early stage, they come into. These are some of the characteristics of that. No, as I was sharing that only these um, um, top 10 states where we can see that women led micro, small, medium enterprises. West Bengal tops in that among the top 10 countries that we are representing here, followed by Tamil Nadu, Telangana, and other states. And if we look at the figure, so we see that almost 61 million now the MSMEs are there in India, out of which women-owned MSMEs are only 12.39. That is representing 20% of the total MSMEs people in this sector. So here also, if we look at the urban versus rural, we see that there is more in rural areas as compared to urban areas, because we are talking of the rural enterprises. So more and more women from rural areas, they are into small, micro and small, because we are talking this from the micro, small, medium enterprises. So in that, we see that there are more women from the rural sector as compared to the urban sector. And also of the total, almost 99% of the MSMEs are in the micro sector. This is very alarming that whatever the enterprises that are considered as micro small, under micro small medium category, they are 99% of them are in micro sector. And most of these are single operated individual, means one women only. Usually we see that in rural areas, women may be into some pickle papar or some spices making or some powders making or something value added products from vegetables, from cereals, and they will be doing as a part of the activity. Or even if they are having some rearing some poultry, birds, or some goatry or other things. So it is single-handedly. They don't employ other women or other labor, but it will be single-handedly operated by them. And only 17% of the women in enterprises uh, are only 17% of the total, of which 95% are operating with less than 6 workers, because mostly we have seen that they are single hand person micro enterprises. Only 17% are women owned enterprises. Rest are all maybe even if in the name of the women, but they not be operating maybe by the other family members. And so this is where we see that micro enterprises is the highest among these categories. So this is something where we need to work on, because we are talking of women led agri startups. So when we talk of agri startups also, we just not, we should not just be satisfied that some power making, people pickle making or something they are doing at the local village level. Selling the small things as and when they produce, not in a very formalized way, but as and when something we have time, they are interested, they they prepare something and sell it to the immediate local market. But when we talk of entrepreneurship, when we talk of startups, we all know that how an ideal startup should be, how it should operate, how it should function, and how it should go. So, but women in, if you see the characteristics of, if you do a study on women enterprises, women-led or women-owned enterprises, you will come across all these characteristics if such studies are conducted. That mostly if they are doing the almost 35% of the total MSME activities that they do, that comes under agriculture and allied sectors. Remaining almost 65%, they are from non-agriculture activities. Tailoring is there, tailoring, stitching, embroidery, maybe some art and craft related enterprises, rural in the rural based enterprises they will be. But agriculture and allied related enterprises is only up to 35% of all the women owned micro and small and medium enterprises.
And also in this agriculture sector also majority of them we see that they come they are into livestock sector, dairy, goatry, piggery, these type of poultry and all. And the rest is it is forestry and then non-crop farming. So these are the which you can see here also that agriculture is so almost about 35%. Remaining are non-agriculture activities. And then in the non-agriculture sector also, if you see that majority is, comes under trading, and then other services, manufacturing is where they will be doing some manufacturing. And this I was talking, livestock is a major, followed by forestry and then other. Female entrepreneurs in India are not safe. That safe in the sense not it is from the safety point of view, but it has its own acronym. That safe is an acronym, so which we will be discussing here. That what it means that women entrepreneurs in India are not safe, and nothing to related with their safety and security. But here, if you see here, it is sustainable, autonomous, formal, and employment generating. So this is what we mean by the women entrepreneurs are not safe. Means whatever they do, it is not sustainable. Why it is not sustainable? Because they operate at a very micro and small level. When they operate at a micro and small level, that is what I said. Sometimes they, as and when they have time, they have resources, they have some uh, surplus raw materials, then they might do it. Otherwise, they may not do it. And because sometimes when they do it, it may be sold, it may not be sold. Sometimes it gives them the they recover the amount that they spend on it, but it does not run over a long period of time. Usually, when we start a business, when we do a startup or an enterprise, it is just like any other organization. Suppose this managed organization, we are almost now 32, 33 years old. So that type of, whether it is a government organization or a private organization or as any business entity, that should run over a long period of time. That does not happen with women entrepreneurs. Maybe some family commitment comes, some family responsibilities come, raising the children, taking care of them. So they will discontinue. So there is a lot of probability or chances that women entrepreneurs, they discontinue. It is very abrupt. Sometimes they start, they close. Again, they will start with something, again they stop doing something. So there is no sustainability in that, and that is why they are unable to be successful. I'm talking about the particularly of the micro and small enterprises where most of the women entrepreneurs come into that category. Autonomous also, that women does not have any autonomy, any authority, control over whatever small or micro enterprises also that they are doing. So mostly the decision making happens or is taken by the family members. Maybe the spouse, maybe the in-laws or any other family members responsible. But women seldom they will get an opportunity to exercise their control over their own small, informal, whatever small things that they are doing. So they don't have autonomy over their own enterprise. Formal also, as I mentioned, that it is not a registered entity. It does not operate at a, like a formal organization. So whatever they can do at home, so they will do, and as and when they do not employ any labor, so it will all be done by the women of the house herself. So in that way, it does not have a formal. And in nature, it is not a formal, it is very informal, and that is why women led enterprises, startups die at a very short span. And also employment generating, they, since as I mentioned that most of the women, they do it single-handedly without engaging any outside labor. So that is why there is, they cannot sustain it for that reason also, because one person if is doing
many possibilities are there that due to certain other emergencies or casualties or any other disruption disturbance at the family level, they will discontinue it. So that is why employment generating, they does not have any scope of employment generation. So that is why we need to support the small and the micro enterprises which the women are doing. Like a lot of self-help groups are there. These self-help groups, there at least some 15, 20, 10 women will be there, and that also we see that some of the SIGs, they are working in, formal way, they are doing in a sustainable way, because some 10, 12 women are engaged together and they get the strength from each other. So that is why mobilization community, mobilization is one way through which women led startups can be strengthened, so that alone they cannot withstand, but together definitely they can uh, um, do miracles. So that's why where the mobilization is something that has been uh, um, from tried out, and it has been proved very successful. SHG is a big example where women SHGs are there. Mm. And they are doing a very, some of them are really doing excellent work. So when we talk of this sustainability, here we have to see that lot of enterprises are there, and they can, as we have mentioned earlier also, that many of them are interested towards non-agriculture related enterprises like tailoring, stitching, embroidery, maybe beautician related things, all these type of things, something. But today, when we are talking of agri startups, in agri startup there is a lot of scope in agriculture sector itself. As I mentioned, dairy, fisheries, mm, horticulture, and agriculture. All these are the sectors where lot of opportunities are there to, if it is a dairy only, milk and milk products, a lot of milk and milk products are there. There are so many schemes also where they can get, but I also is there that most of the women, they face the challenge of credit. So this is one gender issues related to lack of ownership on land or any other family assets. Since women don't have access to their family assets and ownership on the family property, then although there are a lot of um, uh, provisions that even if they don't have property or collaterals, they can still get the benefits of credit. But the ground reality is that at the ground level, women are facing a lot of challenges and difficulties. Mm. Um, this year, when in February, when we had organized international conference, so women, national level women entrepreneurs exhibition also was a part of the conference, where we had invited um, almost 30 women entrepreneurs from different parts of the country. They participated in the conference, in the exhibition, that national level exhibition that we had as one of the event of the conference. So there we had also arranged a pitch session and interaction of the entrepreneurs and the bankers and the media people. So bankers, why? So that the women entrepreneurs, they can pitch their business idea, what they are doing, and the bankers, if any way they can support it to these women entrepreneurs in the getting the loan and finance. And also the media people were there, so that these media people cover their stories, because many of the women are entrepreneurs here and there. They are doing great things, but they don't get the recognition, and they don't get that much of a promotion and branding, so that people can buy products from them. So at least these media people, when they document, when they broadcast, they make a video or a story out of them, and through managed platform we can disseminate it to lakhs of our stakeholders. So that was the idea to how we can support these women entrepreneurs. So here I want to mention here that during the pitching, many of the women entrepreneurs, they were all educated urban. They were all educated urban women led startups, and they mentioned how difficult it was for them to get the loan. And when they used to go to bank for loan, they used to say that you
if you add any male member of your family, we will be able to provide you loan. But alone with women, they were reluctant to provide loan. This is what they had mentioned in the recently 2 months back, that national level exhibition which we conducted for the women entrepreneurs. And they are all educated, very much. I can say rural, not rural, they are back from the urban cities and towns. So if they have to face these many challenges, so we can just well imagine about our rural women, women farmers who are, I believe, very having less education, less exposure, less confidence, and then how so Mudra scheme is there where it says that collateral free. It is a collateral free scheme for the women entrepreneurs where they can get the loan collateral free. But when they have to go there, apply and interact with the people and officials, they face lot of challenges and hardships. So these are something that deter the sustainability of our women entrepreneurs. So this is where we need to support in whatever way we have to, through handhold and mentorship or other technical support, financial support, in whatever way we have to. And autonomous, for bringing autonomous, more autonomy to the women entrepreneurs, lot of, I believe, capacity building of our women farmers, women entrepreneurs is required, because until and unless they get the knowledge, the skill to do the things on their own, to manage the entire activities of related to their enterprise on their own, they will themselves hesitate to take the decisions. Because we are talking about the women who are in agriculture sector, women entrepreneurs from agriculture sector. It means they are mostly rural women. We are talking mostly about rural women who are into micro and small enterprise. So there we can see that only through capacity building in leadership development, in financial literacy, in digital literacy. So all these type of capacity building programs are required for our women entrepreneurs, so that we can ask them, they after this only they will be able to feel confident in taking small decisions, and gradually they can evolve over this. So autonomy is very important. Until and unless they don't get autonomy, it will not be a women-led startups in real sense. In true sense, it will not be. It will be always hijacked by the family members. So they need to emerge as a independent and entrepreneurs, and we should be able to take a majority of the decisions for autonomy. Formal, we need to formalize their sector because mostly they 95% or more, 96% are unregistered or informal. So if they are unregistered informal, they will always have the challenge of getting the benefits of the different schemes, the different programs, the different funds and other things of the government. So in order to get that, they need to be registered, and these type of trainings, capacity building is required. Their hand holding support, encouragement is required, how they can do it, because they need guidance of time to time, so that they can do think of the in this way also, rather than just ending it as a homestead activity. Otherwise, if they do it something by being at home, it just it's considered under the category of homestead activities rather than a entrepreneurial activity. So that is why we need to formalize it also. And employment generating, these are the four things that is safe. And so here we need to see that how we can upscale their enterprise, so that they expand in terms of line of products that they want to do, in terms of volume of production. Then only they can increase their income, their profitability, and that is how, when they can employ more people, and employing more people, for employing more people, they need to have sufficient income so that they can pay them. And if they engage these manpower, definitely it is going to grow their enterprise further, because more number of people will be available for
increased production. So this is how the both ways it is interlinked. So now coming to the most of the challenges I have discussed here when I was talking about safe. So still we see that these women face credit. I have already mentioned capacity building is one thing that really needs to be focused exclusively. We are also trying that lot of focus should go on the digital and financial literacy of our rural women, because we know that now it is a digital world age where even the finance that is all the lending and the transactions, everything is digitalized. We are all doing through Google Pay and Phone Pay and different things, online net banking, everything is there. And how to transfer, how to receive money. So they need to be, and before that, digital literacy is important, where they should be well versed with the functioning and the operation of the smartphone, because until and unless they have access to, it is available to them, and they have all the competency and the knowledge to operate it, then only they can explore and they can tap all the benefits of the digital world. And this is where our women entrepreneurs usually they lag behind other entrepreneurs, because they are firstly, even if they have the smartphone in the for them, it will be hardly seen to be with the women, rural women or the women farmers or the women entrepreneurs, because mostly it may be used by other family members, children and all. They will not be carrying it with them all the time, and they don't get a time or opportunity to see what are the functions that they can use it for. They will mostly be, we did a recently, we did last year April, we did a study in Uttar Pradesh, where we wanted to know the how well versed our women led startups, women led FPOs, women entrepreneurs, they are women agri startups are in digital and financial literacy. We did a short study there in Uttar Pradesh, and it was not a shocking thing, because we know that these are the realities, but we have just re-verified the fact. That is still, yes, smartphones, majority of them was not having it, and those who were having it also, it was not accessible to them. It was not available for their use. And those who were using it also, they only knew to make a call, to send a voice message, sometimes typed message, or mostly they will use the facility of voice message, because in that they need not to have to be literate for that. This much only they were internet use, emailing, sending mail, receiving mail, all these things, how to access all these different financial apps, different things like they are the how to upload a video, how to download they can do, but uploading from where to do all these things. So all these things, it was very poor, and it was, but it was not shocking. So these are the challenges that they are facing when we are talking about women-led startups in this era, in this digital era. These are the must-know things for our women farmers, women entrepreneurs. Then only they can grow their enterprise. Otherwise, they will continue to do what they have been doing it. So these are some of the challenges which I feel, and also, as I mentioned, that marketing is one of the things, because usually since I work for gender in agriculture, we see that marketing becomes a challenge. But exceptions are there in India, where we see that northeast, other hilly states, there we see that women does not have that much marketing challenge as compared to rest of India. I worked in northeast in Meghalaya, in Central Agriculture University for almost 13 years there. So, from my experience of working with the Northeast region, I found that the women farmers, women local market, they have the weekly market. So, there maximum women were found in those markets. That weekly heart, because usually, and particularly, I was in Meghalaya. Meghalaya is a matriarchal state still now.
So there I found that even in Manipur and other places, I found Sikkim, that many women will be there in the market. But if you go to other places, women may not be representing in that much in the local market, and particularly due to the societal norms of class and caste. That certain caste does not permit, allow the women to uh, come into the marketing space along with the men. So these are the challenges, marketing challenges. But still, when I'm talking about the digital era, digital revolution, so this can be overcome if they come onto a online business, where then come to the e-marketing. So where they need not go to a physical market or to a mandi or to a other such type of place, but still everything can happen through different apps have come up now uh, for these supporting the farmers in selling their raw materials, buying the raw materials, selling the final products and other range of products. So our women and startups and women entrepreneurs need to be trained on these apps also, that what are the different apps that are there, what are the things that they can do in that, how they can connect, how they can socialize, how they can build up a community there, because every app and every these type of social media, they offer a community also nowadays. Even they have a closed community. Within that closed community, they will be interconnected with each other, and there they can share their knowledge, they can support each other, the community members. So this is how our women farmers, also women entrepreneurs, needs to be supported, so that they are in some relevant group community, and they benefit from such a community through helping and supporting each other. So these are some of the challenges, that they are not well versed with the use of the digital world. They are not so much exposed to the latest knowledge and innovations. So, our Prime Minister has also launched the Namo Drone Didi scheme recently, and our government is very anxious of training, creating some trained women drone pilots, that are drone Didi, that have been designated as a drone Didi. So under this Namo Drone Didi scheme, women farmers, women entrepreneurs, rural women are being trained to operate the drone, and they are being given training in different batches. Women are being trained. This Krishi Sakhis, those Krishi Sakhis, those who are the para extension women, para extension workers, they are being trained to become the drone pilot, because our PM also feels that digital and empowerment for women is must if we want to see them evolving as a successful entrepreneurs. So if the now the we all know now that it is the age of the drone, the artificial intelligence, precision agriculture. So if our women farmers, Krishi Sakhis are being trained in operating, and not only just operating the drones, but in the service and repair also, so that if anything goes wrong into that, they are able to fix it also. So repair, maintenance, everything. So it becomes a opportunity for entrepreneurship for them. So now people will be taking their services in getting the drone. They can buy, purchase a drone and offer it for the service on rent. And they can also have a consultancy, can give us some advisory things. So that is another entrepreneurial opportunity that we see from this particular scheme. So likewise, there are all these type of ample opportunities in this agriculture sector, where, as I mentioned, processing and packaging is one. Organic food production is we are moving towards natural farming, organic farming. So natural farming, organic farming, this is becoming another avenue, another opportunity where these women-led startups can be encouraged and product. And there are another niche products that are very new, so where women can enter. These things I will just quickly running through the pictures now to just give an overview of the different opportunities that are there in this agri sector.
So these are the dried fruits where they are, and vegetables that can they do. Spices I have already mentioned, spices, pickles and powders. These are the things. Flavored spices are there. Not only this, now it is everything. For that we have for different flavors. You expand the range of a product line. That how they can expand the product line by different flavors, strawberry and mint and all those things can be thought of. Dairy products we have a lot of related to dairy. If yogurt is also there now, in yogurt also it is again mango yogurt, it is strawberry yogurt, it is so many different flavors come into that. Honeybee also, in honeybee not only is the honey that is valuable, but also the honeycomb that you can see, the wax that comes, the venom that it comes from there. So a lot of things, byproducts of honey is there, in which they can be trained and they can choose as an enterprise. You can see all these honey bee products, medicinal products is another thing where they can think of aromatic, sorry, aromatic plant-based products are there, medicinal essential oils are there. So these are all these things that are having high value. They they fetch a lot of money in the market. So this is another thing that they can think of. We have organic range of vegetable products. We have hydroponics in which they are growing exotic certain vegetables like cherry tomato, lettuce, and other things, which are having again more value as compared to growing a tomato or growing any other leafy vegetables. So they can be trained in the areas where there are high commercial value. So these are certain things that can be thought of. So nowadays, a lot of things are there on flowers also. The temples, you must be coming across a lot of things on our different social media, that how they are using the temple flowers. They are collecting the temple flowers and they are making holy colors, holy colors, or they are using it for making agarbatti, different types of agarbatti. They are extracting the dyes out of that they are using it for various purposes. So a lot of things are there where they can be supported to come out with some entrepreneurial activities. These mushrooms are there, biofertilizer, biopesticides, agri inputs related things are there. Agri input is something which I feel is that lot of women needs to be promoted in this sector, because again agri inputs and services related is looked at as a male dominant area sector, because we are managed is also implementing DAY-4 program of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. That is a diploma in agriculture extension of input suppliers. So in that DAY-4 program, all those who have a agri input related business, so they are, it is mandatory for them to attend a 1 year diploma training program, so that because they are considered as a first line of consultancy or advisory services to the farmers. So if they are not given proper knowledge, proper hands-on and training, they will be passing on wrong or misleading information to the farmer. So that is why the ministry had considered it mandatory that all our agri input dealers needs to be trained compulsorily for 1 year, so that they give the right knowledge to our farmers. And in that we see that the women DAY-4 input dealers as a candidate for our DAY-4 program is very less. And this is only where women has the license, but it's still the license is in their name, because only the person who has the license is eligible to attend the DAY-4 program. They are only eligible for undergoing DAY-4 program. So that is where women are, it becomes binding on the women that they only have to come and attend the DAY-4 program and benefit for it. But mostly the license will be in their name. Otherwise, it is all done and by the other family members. So agri input dealers I see as another important area where women-led agri startups can be promoted in different consultancy and products and services sector.
So these are some of the quick pictures I just want to run through. So as I was mentioning about the mobile applications, now mobile applications is also one of the where through a different forecasting, weather forecasting, price forecasting, when and how much input like insecticides, pesticides, all these things are available on the can be provided through app. So women can take this also as an entrepreneurial opportunity for them, where they provide agriculture related information, market predicted information to them, weather forecast related, disease and pest related information to them, give them consultancy and advisory services. So this is also one of the opportunity for our women entrepreneurs, which they can think of. This is the drones, which I have already talked about. Mm. And digital marketing is one which I was talking now. Amazon is there, Big Basket is there, India Mart is there. So a lot of these type of online platforms are there. So women needs training how they can use these online platforms to for direct sale of their product, because other benefit is that where not only it is that they overcome this uh, gender issue of marketing issue that they have the challenges that they face for marketing, but if they get into the direct trading and sale of their produce, the money also comes directly into the women's hands, and this is where whatever the money that comes to them will be used for the welfare of the family, for the welfare of the children, for better education, for better food quality, for better health services. So mostly whatever the earning comes to women, they would like to spend on the welfare of the family itself. So that is why we need to encourage women to our strategy should be such that the income comes directly to the women for the efforts, for the time that they devote for the enterprise. So all these type of things are another opportunities in micro irrigation, water management, because a lot of watershed development programs happens, and women are very much closely related. But when the training and these type of entrepreneurial opportunity comes, then it is again hijacked by the men. So usually all these type of installation, maintenance of drip irrigation, for we don't see women into this, but of course women can also be there, rainwater harvesting. So I see these as a new or the niche opportunities for our women entrepreneurs. So these are some of the pictures. Homestays, farm stays, ecotourism is very much coming as another very important sector as an entrepreneurial opportunity. Lot of focus is given on agritourism, ecotourism. So the women farmers can, or women entrepreneurs can think of maintaining their farm in such a way that it can attract them as a tourist for agritourism. That becomes another additional source of income for them. So this is another way by which they can increase their opportunity of enterprise. Aquaponics, hydroponics, I have mentioned. Beekeeping was also mentioned. Millet, we all know very well about it. So these are some another opportunities that I see for our women entrepreneurs. And of course, the most of the constraints which I have already mentioned here is access to resources like land, credit, which I have already, technological resources. There means exposure to extension services, credit related education and training. These are all something which we need to work on, because these are real challenges for our women and ladies startups, where women budding women entrepreneurs, and all those gender norms, gender barriers, cultural barriers, stereotypes that are associated, that also needs to be addressed, so that, as I mentioned, that certain things women are only doing, something women are not allowed to do. There are a lot of such things that pull women back, and to move forward in their entrepreneurial journey, we need to address. And it is varies from region to region, state to state, but there are of course some universal stereotypes and barriers, cultural barriers, that we need to really address if we want to promote them. So I would like to thank you Just Agriculture here for giving me this opportunity.
to share my views, my thoughts with all of you. And also, I thank all the participants for your patient listening. And if you have any questions, please let me know. Thank you so much. Thank you so much, Vinita ma'am. It was really a wonderful presentation, including for the rural women development and women entrepreneurs. Definitely, our participants have gained good knowledge for it, and you are really working on a great motive also. So, dear participants, if you are having any question, ma'am is available with us. You can interact, quickly ask your one or two questions, as our the next speaker has also joined. But if any participants are having any query, they can quickly ask their queries to ma'am. Ma'am is available with us. Please unmute yourself and ask. You can raise your hand. Yes, Dr. Srisha, you can please ask your question to ma'am. Good evening, Vinita ma'am. Good evening, Dr. Sirisha. Thank you, ma'am. Actually, how much effort do an entrepreneur need for establishing of agri-input services like for fertilizer and biopesticide unit? How much effort and how much time they will take if they start from like marketing or Dr. Sirisha. hello? Dr. Sirisha, sorry, I could not get your question because your voice was breaking. Can I request you to type in the chat so that I get the proper understanding? Ma'am, am I audible now? Yes, you were. Your voice were breaking, so I could not recollect. What I can understand is that probably you want to know how much time does a women entrepreneurs would require to Establish. their venture or business enterprise. Yes, ma'am. Yes. See, the time limit or it all depends upon the circumstances under which she is working, what type of resources she has, what type of support she has, and how much time she has. Because we also know that time poverty is one of the challenge with our women. So it all depends on what type of, if she has the resources, the support of the family, the support from the different schemes, definitely it will take less time. And somebody who is struggling at every level, at every stage, it will take a lot of time for her. Okay, ma'am. And another thing, ma'am, can we get any support from NABARD or any other funding agencies for establishing of a biofertilizer and biopesticide unit, ma'am? I think, of course, you can. And also in a manage also, there is a one scheme RKVY Raftar, Rashtriya Krishi Vikas Yojana, that RKVY Raftar. For that also, there is a scheme where they fund for ideation at the ideation stage and also for the upscaling of the business. But it has to be an innovative idea. So if any women entrepreneurs has any innovative idea, they can pitch their ideas under RKVY Raftar scheme, and if it is screened, it is shortlisted, they will be eligible for grants under this scheme. Also, there is a ACABC scheme, also Agri Clinic, Agri Business and Agri Clinic scheme, which also is implemented through Manage. In that also, it is a first, but they have to undergo 45 days residential training. 45 days residential training is mandatory. There are some 40, 50 identified areas in which they can choose one and get trained, and then the DPR, they prepare a DPR, they submit to the lead bank of their area, and through NABARD and other banks. Manage has MOU with lot of banks
So they will submit the DPR to the bank, and then if found viable, the bank supports them through grants in that, and NABARD will provide subsidy in that scheme to those entrepreneurs. I hope I answered your question, Dr. Sirisha. Yes, definitely, ma'am. Most of the queries are definitely solved by your presentation, and if further participants will have query, then we will have the queries with us in the participants chat box and email, and we will convey it to you. Thank you so much, ma'am, for being with us on this online platform. We are glad enough and fortunate enough to have you with us. And thanks again for sparing your valuable time from your busy schedule. Thank you so much. Thank you, Thank you so much. Just Agriculture and all the participants. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. So, respected participants, moving ahead with the second lecture of the fourth day, our next speaker, Mr. Vivek Shukla sir, has joined us. He is the co-founder of Rise Hydroponics. Sir, can you hear me? Yeah, you're absolutely audible. Okay. Very good evening, sir. Welcome to the online platform of Just Agriculture. We are glad enough to have you with us on this online platform. Before inviting you, sir, I would like to give a small introduction about you to our participants. So, Mr. Vivek Shukla, sir, is highly experienced and skilled professional who holds a prominent position as a director of circular development and training head at Rise Hydroponics with a postgraduate diploma in business management, specializing in international business from a leading institute in India. He brings a wealth of knowledge and expertise Hi, Mr. Piyush. I guess you're not audible to me. for Rise Hydroponics and Rise Fresher is responsible for developing and implementing strategies to promote the company's product and reach new customers. Sir is having an extensive background in training, pedagogy, as well as his close work in numerous cooperation, demonstration, and commitment to excellence in training and education. With his deep understanding in the industry and the need in the market, Vivek sir is able to develop and execute effective marketing campaigns that drives sales and increase brand awareness. Sir is also having good experience and is very much dedicated to his work, which has made him a valuable asset to Rise Hydroponics. And his contribution are to the lead company even for the greater success. It was a brief introduction of our next speaker, Vivek Shukla sir. Now over to you, sir. Vivek sir, please. Sure, sir. I will be absolutely brief and I will be to the point, sir. Thanks a lot for giving me an opportunity to speak, sir, with respect to our topic that is agripreneurship and innovative horizon. Before moving further, I will just try to give a bit brief about ourselves, like who we are. I'm from a Rise Hydroponics. We basically take a pride in saying like we have made a maximum number of commercial hydroponic setups in pan India. Sir, my slides are visible to you. I'm audible? Yes, sir. Your Yeah. slides are visible and you are clearly audible. Yeah, so basically we have started our journey from, you can say, from Ahmedabad, and currently we are available almost in pan India. From, you can say, we have made a farm from Jammu to Tamil Nadu. We are also having in Samba. We're in Tamil Nadu. We are in Coimbatore. So like pan India, we have worked. We have almost presence in a different locations, not only in India but also in abroad. Also, we have made a number of farms. We offer a number of services which can be a part of, you can say, with respect to the entrepreneurship. अगर आपको कोई business करना है, opportunities देखनी है, all those things. Basically, we have bundle up a number of things. We are direct distributor of a number of players like the Netafin, Rizwan, Blue Lab, Jenica, Flex, Yara, Sakata, Bizojedens. We have a client base of, you can say, Sangam, Hero, IFCO,
or in a number of. So see, try to understand, coming to the very basic point, entrepreneurship. Whenever we use the word like entrepreneurship, try to understand one thing that I believe lot of people don't able to understand. It's not regarding opening a company. It's not regarding making a money. It's all about finding a solution of a problem. अगर आपके पास problem का solution है, you will be able to do whatever you feel like. Entrepreneurship, basically what we do, we try to check it out the problem, where the problem is existing, and how you can contribute to rectify the problem, to give the remedial solution to the problem. So if you're going to check it out the current scenarios, what basically happening in a pan India or say the globally, there's a lot of malnutrition, there's the biodiversity loss of the climatic change, unsustainable food consumption, diet related issue, then we are having the population growth, environmental control, food loss, waste, unsustainable food production, and a number of things जो मैंने इसमें लिखा भी नहीं है. So whenever it comes to the anything, since this whole workshop is with respect to agriculture, so I won't be deviating from the topic, but agriculture or say agripreneurship is all about this problem kind where we are having the issues and how we can rectify the issues, how we can overcome the problems. Those problems ke we come with a solution, and that solution, that's how basically we generate a business out of it. So first of all, identification of the issues is one of the most prominent thing that one have to consider. As far as the agriculture is considered, one thing is double sure that the population is increasing like anything. In addition to that, since population is increasing, the agriculture land is constantly decreasing. Agriculture ki land kam ho rahi hai. What does it mean? That the burden on per square meter per acre is increasing like anything. So here we have a number of options opens by default. There is a lot of adverse effect of using the harmful pesticides like impact in environment, surface contamination, root ground contamination, water contamination, soil contamination. So we don't see is at issues, we don't consider them as an issue. These are the opportunity. हम इन सब field में work कर सकते हैं and we all can be agripreneur. So basically that is a bottom line. There are the n number of environmental changes are happening, like with respect to the climate change, unsustainable things हैं, कभी बरसात होता है, कभी drought होता है, कभी there is extreme weather. So what is the, like, in addition to that, there is always a scarcity of land, scarcity of fertilizer, and scarcity of water. These all are the limited resources. We all know what's basically state like Karnataka, how basically they are facing water problems. तो हम क्या कर सकते हैं, what we can do so that our plant will take a limited water, how we can save water, how we can save land, how we can utilize all the land in the best possible ways. When I try to talk with respect to utilizing the land, I'm not trying to talk with respect to only fertile land. Unfertile land को हम कैसे utilize कर सकते हैं, what type of the fertilizer we can do, how basically we can decrease the use of the fertilizer we are mixed with the heavy metals which are extremely harm to the body. So basically entrepreneurship is all about finding a solution of a problem का solution find करना ही, there is the only way out, rest there is no way out of it. So a number of things are there, we have to give a thought how basically we can do. There's a number of way of control environmental techniques that we can use, and everyone can be a part of it. Like you can say we are having a net house, grow bag, grow slab, flatbed, A-frame, containers, vertical farming, and there's a lot of history has been involved in it, how basically it happens. In the last lecture, I have just gone through like people were talking with respect to hydroponics, aeroponics, aquaponics, vertical farming, grow bag, grow slab, cocoa pit, all those things are absolutely awesome and really have one of the best scope that anyone can ever think about it. But before identifying the problem, before coming with a solution, we have to rectify each and everything in a best possible ways. For example, what basically, see the things that might be a very lucrative in some other places, because solutions are basically customized. There is nothing like universal solution. Universal solution जैसी कोई चीज नहीं होती. For an example, lot many people, if you will go to the location like the Netherlands, Switzerland, people are having what we call they have the glass houses. If you're making a glass house in country like India, you may end up with a mess just by saying something कि वहाँ क्या हो रहा है, we are just doing cut copy of the things. It is not going to work it out at any given point of time.
So, like, it's what we should understand before even identifying the problem, before even going with the solution. We should understand what the other people have done, why basically they have failed. Reason we have to do a complete research over it. Without doing research, because you must have heard lot of hydroponic farms or aeroponic farms or aquaponic farms are practically struggling. Why they are struggling? People started their business, तो business start किया था, but still because not doing proper study, what people have done, they went somewhere, उन्होंने कुछ देखा, cut copy किया, but in that particular location there might be a different scenario. Here there might be absolutely a different scenario. So we have to be double sure, because problem solution should be absolutely customized. Why? In a country like Netherlands and Switzerland, all those things, electricity का कोई issue नहीं होता. Here, no one can give a guarantee that you will be having a 24/7 electricity. If you are using some system which need a 24/7 electricity, and if you are in a field, you may end up with a mess. In addition to the lot of things, basically people are trying, actually a number of times, it's something very harsh, but I have to say, just by doing cut copy with respect to hydroponics, aeroponics, aquaponics, without doing any basic study, people jump into it, like cultivation of saffron, cultivation of this, without understanding the ROI. People jump with the aquaponics. ROI kahan hai, return on investment, whether it is advisable or not, what they are saving, what they are doing loss. Just people get excited by seeing a couple of videos and all those things, and without doing any research, they indulge into it and end up with a mess. So a proper study in any business, if you want to go, for example, the hydroponics, since my core area is with respect to all those type of stuff. So basically we give train, we try to explain, we try to give in and out of the things. I will just try to make you more understand what is the objective. How, see, it's again coming to the same bottom line. Every business comes with a solution. आप धंधा क्यों कर रहे हो? Why you want to become agripreneurship? आप entrepreneurship क्यों कर रहे हो? What solution you are giving to the society? If it is a valid answer, if you're having a valid answer, then it makes a sense. If it is a vague answer कि मेरे को पैसा बनाना, it doesn't make a sense, because पैसा बनाना, see, money is the outcome of the business. Your core focus should be how to overcome the problem. So first of all, you should understand where is the problem. For example, किसी ने बोला कि just do a business of sapling, nursery खोल के कर लो. First of all, we have to check it out the location, because saplings or the nursery or the plantation you will be giving to the farmer. If you are opening in a location जहाँ खेती होती ही नहीं है, then it will never make a sense and you will end up with a mess. It doesn't mean that the nursery business is not a good business, but the location you are not able to identify. If you are doing something, if you are making some nursery of a particular thing that is not grown locally, then again it doesn't make any sense. So what I always tell to the young entrepreneur, कि भाई problem should be valid, location should be valid. Lot of hydroponic farms which have been shut down because they have made all we're going with the leafy greens, and they are basically establishing in a remote location. It is extremely perishable item. Without understanding the things, if you're going to put in a remote location, it need exclusively, you can say, temperature controlled cold storage type of the things to transport the things. And if you're doing something without doing any study, just I have a land and I have to do something, I'm so sorry to say you may end up with a loss. So problem solving, problem कहाँ पे है? Plus don't get panic. उसके लिए study करें, try to understand the things, check it out all the scenario, how basically things are working, whether it is advisable or not, what's my objective, उससे लोगों का benefit कैसे होगा. See, if people are getting benefit, if you're really having a solution, there is no second thought you will get a business out of it. And if people are not getting a solution, there is mess up happen, then your hard-earned money can be drained out. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजों को समझे. ऐसी चीजें दिखती नहीं, यू हैव टू डू अ ग्लोबल सिनेरियो एनालिसिस. फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू द ऑल टाइप ऑफ द प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, चाइना कहाँ पे, कोरिया कहाँ पे, स्पेन, व्हाट डू दिस ग्राफ शोज? दिस ग्राफ शोज वेयर वी हैव अ स्कोप. एज फॉर द इंडिया इज कंसीडर्ड, एज फॉर द पॉपुलेशन वी आर एट अ टॉप. एज फॉर एज द प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन वी आर नॉट इवन अ टॉप 10. What does it mean? It means we have a scope. क्योंकि ultimately people will consume the food. So it's all about the vision. See, when we talk about the vision, like when we have started, there was only one thing in our mind: how basically we can make agriculture as a sustainable. Like if you're in abroad, if someone say I'm a countryman, that means he's a farmer. He he's
sits like anything, he behaves like anything, he's a like well-to-do person. Bharat mein koi bolo, sir, I am a farmer, what does it mean? We are having a sorry face, like he's not making that much what is required. So how basically this balance can be maintained? Lot many people in a like location, like you can say North India, say UP, Bihar, Bengal, Orissa, they work in a different state. Although they have a land, but still they work because they are not able to make much out of it. Hence, they are transferring to the different location. How this migration can be stopped? How a person can make a money out of his 1 acre of land, at least 1 lakh per month? So having this thing in a mind, we have started the thing. Same way, everyone should have a vision. Oh, bhai, kar kyo rahe ho? What is the basic reason behind it? And if reason is solid, and if you're like all type of the thing that you're performing, if that is a solid, then it will absolutely make a sense. And you will be able to do some miracle in a particular business. Otherwise, जैसे आपको पता है बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट होते हैं बट हार्डली 10% कैन सर्वाइव, 90% शट डाउन हो जाते हैं. So we have to be very much sure basically what we are doing. A number of things are there, like starting from organic, hydroponics, soil as poly houses, then you can say export, import, a number of things are there. First of all, I say everyone कि अपनी competency, we have to increase our competency. We should get training. Suppose कोई poly house में जा रहा है, net house में जा रहा है, grow bag में जा रहा है, how basically selection of growing media, crop selection, seed selection, trellising, nutrition, each and everything that a person is doing in your firm, you should have a basic idea. I'm not telling that you should be expert, everyone should become agronomist, but they should be aware what's basically happening. So unless farming kya hai, IoT based automation, see, you can do any business like IoT. See, everyone is going for the IoT. Labor is very expensive. Jitna automation rahega, dosing rahega, ECPS sensor, everything can be, how you are reliable, how you are better than the competitor. All those things absolutely make a sense and gives you exact platform. Agar, see, try to understand the problem कहाँ पे. Lot many people just do a entrepreneurship कि भाई job नहीं करेंगे, चलो entrepreneurship करेंगे, कुछ करेंगे, पैसा बनाएंगे. They even don't know what is the problem, why they are doing. Lot many people so called they are doing the research in ECPH. By ECPH sensor सब बन चुके हैं. Why people are repeating same thing out of the same thing? See, just let you tell you, I'm not a professor. हम लोग basically business करते हैं. We take a pride as far the India is considered maximum hydroponic के structures हमारे लगाए हुए हैं. In fact, lot of jobs we have given more than, I believe, more than 1,500 agronomists have been trained from our organization. उतने लोग train किए हैं different locations पे. A lot of farms people are doing, and the people who are owning a farm all are directly or indirectly are agripreneur only. वो लोगों को जॉब देते हैं, कुछ एक हेल्दी ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दे हैव अ विजन. सो बेसिकली मोर एम्फोसिस शुड बी गिवन टुवर्ड द विजन. आप कर क्यों रहे हो ये सब का, and from there you will get a solution whether you have to go with the leafy green, exotic, आपके एरिया में क्या चलता है, कौन से क्रॉप्स हैं, कैसे हैं, मेडिसिनल क्रॉप्स में जाना है, स्टीविया, वो करना क्यों है, which type of a system. Lot of type of systems are there. NFTY flatbed, A-frame, DWC, ebb flow, brick system, arrow tower, Dutch coco pit, grow bag, और उसके बारे में इंस्टेंस ट्रेनिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं, समझना सीखना. सिंस अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, सिंस ये agriculture related things है, basically we are giving more emphasis on the agriculture part. So almost lot of, I know a couple of people who are working on the indoor grow lights, NFTs, like the indoor grow light, horticulture grow light, what type of the like wavelength we can use so that we can get a maximum production out of the plant. Lot of people get an excitement and they open indoor farm without knowing the one thing, that the cost they are getting outdoor, it will be somewhere about 3 times more in indoor. वो लोग पैसा लगाते हैं, फार्म लगाते हैं, तब बोलते हैं सर इट इज गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव और शायद मुझे शट डाउन करना पड़ेगा. दिस ऑल स्टडी कैन बी डन इन एडवांस ओनली. कहीं कैपेक्स डालने से पहले भी आप कर सकते थे कि इंडोर में सपोज लीफी ग्रीन्स कॉस्टिंग समवेयर अबाउट 40 to 50 रुपीज पर किलो. Outdoor may suppose leafy green is in fan pad structure, suppose leafy green is costing somewhere about 50 rupees per kilo. Indoor may same structure, same leafy green will cost you tentatively about 150 rupees per kilo. What is the basic reason? Basic reason is with respect to the grow light. ये 22 watt का grow light है, it brings electricity.
लॉट मैनी पीपल के कॉज सर मेरे घर में स्पेस है, ग्राउंड में है, बॉटम में है, बेसमेंट में है, यू नो, एंड वी वांट टू डेवलप इन अ फार्म, और हम उसको एक बिजनेस करेंगे। भाई बहुत अच्छी बात है, बट इफ योर कॉस्टिंग इज गेटिंग 3 times हायर, वेदर यू विल बी really able to compete with the market? If no, then you will end up with a mess. Or look, because they have seen farm somewhere, they went to abroad, people are doing in Canada, वो लोग बहुत करते हैं. Why? Because in outdoor there is the temperature of -17, you can't do anything outdoor. In India we have a number of option. Outdoor में कौन सा इधर पे -17 -20 हुआ, कौन सा we are living in a Vancouver. So don't get excited. That's what I basically generally try to tell the people. They just get motivated by seeing some video, by seeing something, and just they put, and they come with some harsh result, or say something like sorry. So try to understand the problem, try to learn, उसके ऊपर study करना बहुत important है. At least 6 months, 1 year, you try to understand each and every component. In fact, I always recommend, कुछ धंधा करने का सोच रहे, at least do a job. Suppose you are thinking for opening a cattle farm, तो भाई किसी कैटल वाले के साथ जॉब करो, डू अ वर्क इन अ डेयरी इंडस्ट्री. यू विल अंडरस्टैंड एटलीस्ट इन एंड आउट ऑपरेशन आउट ऑफ इट, वेदर इट इज एब्सोल्युटली यू हैड बिल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग और नॉट. Not many people open cattle और बोलते हैं यार इसमें बहुत मेहनत है, ये है वो है. Like इससे and like this you are understanding after putting a 1 CR. It was 1,000 times better. At least you can work in some tabela or a dairy farm, so that you can conclude the things before putting money, whether you are practically built for it or not. Lot many people, sometimes they have introvert personality, they are not that much comfortable in talking with the people. When you're doing all those things, to bechna padega. Like for example, if you're doing a business of the leaf ingredients, all those things, you have to talk with the you can say trainers, gymmer, dietitians upfrontly. So उस टाइप के लोग होने चाहिए, प्रॉपर टीम होनी चाहिए. Lot of people make team with जो उनके जैसा है, or they try to took their relatives and all those type of stuff. We should have an absolutely diversified team, so that the weakness that you are having, at least आपके partner की वो strength होगी. If two person who are born with the same background, same family, same location, they will be able to run very successfully, very challenging. Because diversified thought आने चाहिए, जो आपके उधर पैदा हुआ है आप जाता है, तो like both are having a same circle with respect to friends and all those things. तो एक entrepreneurship में बहुत like I always see 1 hour time is very short. And I will try to give a sufficient time for the question answer session and all those things also. But that's what I personally believe. Like आप कुछ भी करें, vertigo tower, Dutch buckets. For example, I'm sure lot many people must have seen the Dutch buckets. They must be topping. Just to inform, as far as the India is considered, it's not advisable. What is the basic reason? One Dutch bucket costs somewhere about 700 to 800 rupees. And one coco pit grow bag costs somewhere about 150 rupees. Something जो 800 रुपए में है, 150 है, तो भाई Dutch bucket लगाना क्यों? In this, we are having a 24/7 electricity is required because it is active hydroponic. It is a passive hydroponic. 10-15 minutes सुबह आपने drip दे दिया, 10 to 15 minutes evening, and thing has been done. Without knowing the thing, just to become entrepreneur, people are opening a farm with their Dutch buckets, all those things, and then they are telling, sir, you know, we are not getting that much of profits and all those type of stuff. So again, they end up with a mess. कि भाई ये हो कैसे गया? It's all about the lack of study. You went to Europe, you saw something Dutch bucket. There might be a different scenario. In India, there is a different scenario. In Europe, you don't get a coco pit. It is very expensive. India, we have a coastal belt. 90% coco pit कोयम्बटूर से आता है. So again, coming to the same point, customize hai, solution should be customized. They are doing on a Dutch bucket. That it doesn't mean that we should also opt for it. How the basically customized solution are there. For an example, as you can see, this particular NFT in abroad, they give a slope. Why they give a slope? Because their pump work 24/7. Water come via gravity. When we make a farm, we don't give a slope. We make sure there's a 1 centimeter of water always in NFT channel. What is the reason for that? The reason is very simple. कल को कभी लाइट जाएगा, कुछ जाएगा ना, this 1 centimeter of water will make sure it will enable to survive the plant for at least 8 to 10 hours. In addition to that, we make sure the water flows in a ratio of 10:2. What does it mean? It means 10 minutes आपका NFT channel बंद रहता है, and it only works for 2 minutes as far as the NFT pump is considered. What is the advantage? Advantage is that you can save lot of electricity. Bills can be saved. 24/7 चलेगा तो it will consume electricity. Like एक simple calculation देखते हैं. Suppose you have a NFT farm. You have a NFT farm.
And if you have a 5 HP pump, 5 HP pump working 24/7, 1 घंटा 5 HP का पंप चलेगा, it will use somewhere about 4 unit of electricity, 24/7 चलता है, 96 units it will consume. And suppose you are having a electricity charges 10 rupees per unit, so tentatively if it is 100 unit and 10 rupees is a charge, so what does it mean? It means 1000 rupees per day, महीने का 30,000, साल का 3,60,000, 15 ईयर का somewhere about 52 lakh. And if you're having a ratio of 10:2 means 10 मिनट के लिए बंद होता है, 4 मिनट 2 मिनट के लिए चालू होता है, 1/5 आपका 8-9 लाख में. द कॉस्ट ऑफ होल फार्म इज अबाउट 32 lakh. सिर्फ just not giving a slope, and in European countries everyone give a slope. So again, coming to the point, approaches are customized. They are doing, there might be a different reason. Here, since we know there the challenges are with the electricity जा सकता है, आ सकता है, at any given point time हमें limitation में नहीं पड़ना चाहिए. So don't randomly run. What is the bottom of the whole story? कि आप randomly मतलब बिना सोचे समझे, because nowadays I am seeing everyone is talking about the entrepreneurship हम करेंगे, and उतने मतलब without understanding the things, challenges आते हैं, hurdle आते हैं, लोग समझना नहीं चाहते, even they don't give a time to the question, the solution they are opting is true or not, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, they end up with a mess. For an example, in this NFT channel only, lot many like few people came with the double layered NFT, with the corrugated NFT. It is such a pathetic thing because water goes inside the corrugated part. वो पानी कभी नहीं निकलता, you will end up with the fungus growth. Why they made, even don't know. They tell, we can maintain a temperature and all those things. That is absolutely bullshit idea. So without giving a thought, you make a die, you do a things, and if something is not happening, the whole business suffer. So we should understand the things everywhere. Ever you can do a business with respect to agronomists, with respect to cocoa pits, cocoa pit grow slab, customized approach are there. Never, there can't be a same approach for each and everyone. So a lot of things always plays a very vital role, like whether we should go with the vertical. Like a lot of people have opted for the vertical curcumin and all those things, and all those structure got failed like anything. They got excited, किसी ने कुछ किया. For example, glass house that I'm talking about. The cost with respect to glass house and the poly house that we make, somewhere about plastic and glass is somewhere about 5 times higher. In European country, people use the glass house because उधर snow पड़ता है, plastic unable to hold the snow. But in India also people are making glass house. अब ROI कैसे निकलेगा वो तो भगवान ही बताएंगे फिर. So again coming there, because generally entrepreneurship में इसमें what basically without putting our brain हम cut copy करने का try करते हैं, and without understanding the thing. For example, fan pad structure, lot of things have been failed because लोग fan pad के लिए opt करते हैं having a height more than 6 meter. 6 meter height करने से surface area बढ़ जाता है, cooling हो ही नहीं पाता. And crores of money has been invested. Distance from exhaust fan and poly pad, they make so big कि temperature ही नहीं control हो रहा. What I want to say, although they had started a business of farming and all those things, but with lack of adequate knowledge, they have been messed with the things. So getting knowledge is the one of the basic thing. कैसा exhaust fan चाहिए, what is the dimension, pad के dimension, इसके like, and since it is agriculture again, so I'm giving a bit agriculture examples, but it is absolutely true with each and every business that you basically opt for. We are in a supply chain. We supply to the big baskets. We supply to the Blinkets defense. We supply to the Azadpur Mandi, different locations. So we are in a selling. We are in a growing. We have economists. We are in making. We have our own फैब्रिकेशन यूनिट्स. तो सब अपने आप में एक बिजनेस ही है. फैब्रिकेशन का भी एक बिजनेस है, इसका भी बिजनेस है. हाउ योर सोल्यूशन, हाउ योर कॉस्ट इफेक्टिव, हाउ यू आर एबल टू गिव अ वैल्यू चेन, तो एवरीथिंग मैटर लॉट. सो एक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन डेप्थ, बिकॉज अनलेस एंटिल यू डोंट हैव इन डेप्थ नॉलेज, तो आप एक थंब रूल के हिसाब से काम करोगे, एंड थंब रूल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन. कहीं पे विंड हाई हो सकता है, तो यू हैव टू पुट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. इफ यू आर इन अ कोस्टल बेल्ट, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए. सेंट्रल ऑफ इंडिया में तो ऐसा नहीं चाहिए. तो ए नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. तो अपने को समझना चाहिए स्ट्रक्चर वाइज क्या लगता है, कैसा. इफ यू आर नॉट नोइंग द नॉर्म्स, पीपल विल
you will surely pay for it. For an example, ideally 1 acre of NVPH, that is the naturally ventilated polyhouse, you tentatively 23 tons of GIs are used, that is the galvanized iron. Lot many farms are made from 7 ton only. What is the result? Result ये है कि 3-4 महीने में collapse हो गया. What is the basic reason? भाई material ही कम डाला था. And people get excited, चलो फार्म खोलेंगे, ये करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे. भाई एटलीस्ट गेट अवेयर कि कितना लोहा लगना चाहिए, बिकॉज वेंडर विल एक्सप्लॉइट यू. And it's not his mistake. You have not taken adequate knowledge, then you will be suffering. Lot many people come, sir, कितना costing है? Costings are directly proportional to material. कौन सा material? Material they don't talk. No one talks कि कितना span, कितना weight, what is the weight of GI thickness. No, just tell me 1 acre of costing. That's it. It's just like that. Just give me a cost of one car. Starting from a basic model of car from 3 lakh, you're having a car of 3 CR, 4 CR. और सब कार ही है, डिपेंडिंग ऑन द कंपोनेंट. 2 लाख का गाड़ी या 3 लाख की गाड़ी 3 करोड़ को कैसे कॉम्पीट करेगी? और एक्सपेक्टेशन इज ऑफ 3 CR. ऐसा भी हो सकता है आपने 3 CR का पैसा भी दिया हो, बट सिंस यू आर नॉट अवेयर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन ऑल दोस टाइप ऑफ स्टफ, व्हाट यू ब्रॉट इज 3 lakh कार, एंड देन यू ब्लेम कि it's not working, this business is not good. It's not regarding a business is not good. Your understanding towards the business was not adequate. Hence, you end up with a mess. Which type of a material? What is the poly sheets, fogger, which companies, speed, trellising material, weedment? You will shock to know more than 50% of polyhouse in India are basically galat bana hai. Direction is itself wrong. The gutter should be always north-south. How it happened? Galat kaise ban gaye? In lack of information. उसने उसको देखा पड़ोसी कर रहा है, पड़ोसी बिकेम एंटरप्रेनर, हम भी एंटरप्रेनर बन जाएंगे, ये करके. सो अगेन कम टू द बॉटम लाइन. कुछ समझते हैं, पढ़ते हैं, चीजों को सीखते हैं, कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं. देन सी, नो वन कैन गिव गारंटी ऑफ सक्सेस, बट इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंक्रीजेस इफ यू आर हैविंग एडिक्वेट नॉलेज. बिना नॉलेज में सक्सेस की 2% की गारंटी. इफ यू आर हैविंग ए नॉलेज, एटलीस्ट दैट प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 50%. So whenever we do a business, we always see the probability. भाई probability क्या है? And it's all about the probability. Percentage of chances क्या है? Same is true with the share market. Share market में आप डालते हो भाई, गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है. But if it is a बढ़िया कंपनी है, probability is always going high. So it's all about that. We should understand. जबरदस्ती एक्साइटमेंट नहीं करना चाहिए, जो कि आजकल की जनरेशन में जनरली है. डिफरेंट मॉडल्स हैं, शेड नेट्स है, ये है. किस टाइप का मटेरियल यूज करते हैं, नर्सरी डेवलपमेंट्स क्या हैं, बिकॉज नर्सरी इटसेल्फ इज द बिजनेस, मेकिंग फार्म इज द बिजनेस, मेकिंग कैटल इज द बिजनेस. इनफैक्ट आज एपीकल्चर, like जो बोलो is ultimately the business only, and lot of things are there in fact what I personally believe, nursery वगैरह is one of the finest business that anyone can have. ओपन फील्ड फार्मिंग में 1 एकड़ में 10-12 हजार पौधा लगता है, 1 रुपए का सीड है. पीपल सेल अ प्लांट सैपलिंग इन 2 to 3 rupees. 1 महीने में आपका 1 रुपया 2-3 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है. व्हाट यू एक्सपेक्ट मोर? बट हार्श पार्ट इज दैट पीपल डजंट नो हाउ टू मेंटेन इन नर्सरी. टेम्परेचर कंट्रोल है कि नहीं है, थ्रिप्स अटैक है, ब्लैक थ्रिप्स है, व्हाइट थ्रिप्स है, फंगस है, हाउ टू ओवरकम द चैलेंजेस. इवन दे डोंट हायर एग्रोनॉमिस्ट, दे गो समवेयर, 1-2 दिन कुछ सीखा, देन दे गो बस अब कर लेंगे. It's not कि 2 दिन में नहीं होता. It need a time. At least you, if you're doing something, suppose I want to be a owner of a farm, say bell pepper. At least मैं एक cycle bell pepper की देखूं तो सही. What are the challenging, starting from a seedling, starting from a sapling, ending with the harvesting, कहाँ पे है, कैसा है, then and only you will be in a position to make some decision, कुछ conclusion निकाल पाएंगे. लोग एक बार में देखते हैं फार्म देखा, instantly they make a decision. Oh my gosh, how they are doing the things. Irrigation, no idea about the PCJ, manifold, online drip, because components के cost change होते हैं. इंडिया में 2 रुपए पर मीटर से लेके 25 रुपए पर मीटर तक की ड्रिप है. And if you're using a 2 meter per meter, you will end up with the losses. There is no second thought with respect to that. तो ये सब चीजें अपने को समझना पड़े, भाई क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. Components can, lot of farm are not even having a proper component. What is the basic reason? Since the people who are making a farm, उनको ही नहीं पता था, तो सामने वाला तो कॉस्ट ही बचाएगा. If you don't know that sand filter is used, why a person will use a sand filter? At least वो अपना 15-20 हजार रुपए बचा लेगा ना. And you even don't have a sand filter in your farm. So a lot of things are the selection of meat.
there's a selection of the medium, कौन सा medium है. The things like grow cocoa peat are available from 2 rupees per kilo to 40 rupees per kilo. You should know the quality, whether it is old है, नया है, it what's it EC electroconductivity is below 0.25 या high EC का है. Because a lot of people purchase, farm suffers, their agripreneur generally crashes. So knowledge एक है that I believe everyone should know. Stone wool कब use करने का, cocoa peat क्या है, cocoa coir क्या है, because lot many people they just believe on a vendor. उसने बोला अच्छा है, but he is telling अच्छा because he is making money out of it. If I'm getting a coconut coir at economical rate and if I'm able to sell at a higher rate, तो मैं बोलूंगा साहब coconut coir ही करो use. Why he is saying that? Because उसका margin high होगा ना. That is the only basic reason. ओएसी शीट्स है, क्या करते हैं, क्रॉप प्लानिंग्स क्या, लैक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग. बेल पेपर में फायदा है भाई इस सीजन में, लाइक इट्स एक्सट्रीम समर, whether we are able to grow the sapling. Answer is no. What is the ideal time of growing the bell pepper? At end of June we put a sapling, 40 days it's in a sapling, then basically we transfer. 8 महीने उसमें रहता. So if you have done a germination at end of June, जुलाई ये सैपलिंग पे है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इन इंडिया गर्मी मार्च के बाद चालू होती है. तो एकदम कंफर्टेबल ये साइकिल कंप्लीट होती है. इनिशिएटर नए आदमी को यही पैटर्न फॉलो करना है. नो डाउट पीपल आल्सो ग्रो इन समर बट दे हैव एक्सपर्टाइज. इनिशियल लेवल पे इतनी एक्सपर्टाइज नहीं होती, आप फंबल कर सकते हो. सो इनिशियल लेवल पे किसी को चांस नहीं लेना चाहिए. मल्टीपल क्रॉपिंग, दुनिया भर की क्रॉप एक जगह कर दिया, एंड विद द मेस. इवन द इंस्टीट्यूट लाइक एनएचबी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड सेज कि साहब अगर मल्टीपल क्रॉपिंग करोगे वी वोंट बी एबल टू गिव यू अ सब्सिडी ऑफ सिंगल पेनी. स्टिल पीपल डोंट अंडरस्टैंड. 1 एकड़ के फार्म में टमाटर भी लगा दिया, गोभी लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, एंड इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ पेस्ट. जस्ट कि सर सब हमसे बास्केट लेंगे टाइप ऑफ सिलेक्शन ऑफ सीड. लोग पॉली हाउस के अंदर दे पुट अ डिटरमिनेंट वैरायटी, इनडिटरमिनेंट वैरायटी. सीड्स आर 2 टाइप्स, डिटरमिनेंट एंड इनडिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट्स में ब्रांचेस में फ्रूट्स आते हैं, इनडिटरमिनेंट में स्टेम्स पे आते हैं. विदाउट अंडरस्टैंडिंग कैसा सीड्स चाहिए, सिलेक्शन ऑफ सीड क्या है, पीपल एंड अप विद द मेसी. आई एम नॉट हियर टू मेक अ फियर. फियर करने के लिए कॉन्शियस, ताकि किसी का भी हार्ड अर्न मनी है, बट शुड नॉट एंड अप विद सम न्यूसेंस. टेक प्रॉपर ट्रेनिंग, इनोवेशन ड्रोन से लेके हर जगह है, बट सॉल्यूशंस कहाँ पे है? न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकते हैं, थेरेपीज हैं, पेस्ट है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट्स है, कौन सा टाइप है बायोपेस्टिसाइड, कौन से एट व्हाट टाइम वी आर सपोज टू यूज. तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है. ऑपरेशन क्या है, ट्रेनिंग्स क्या है, स्टेप्स क्या हैं. सो लाइक लॉट मेनी पीपल डू अ बिजनेस ऑफ सैपलिंग, वो जस्ट प्लांट्स ही बेचते हैं. So all those things are there: nutrition, preparation, this crop management. आप डेयरी के टर्म्स में करना चाहो तो सेम चीज उसमें है. Since we are having more expertise in all those things, although we make the dairies and all those things also, so basically we do. So since I can check it out, only 10 minutes are left with us. I will request, like, if anyone is having any question with respect to this, I will be more than happy to answer any type of a question that you're having. With respect to entrepreneurship, with respect to anything, with respect to the farming, with respect to business, with respect to export, import, opportunities, whatsoever, feel absolutely free to communicate regarding anything. I have decided, like, I will give a more time to question and answer session. That is the only basic reason I try to, wind up in the best possible ways, and I try to give a pragmatic approach towards what basically happening in the market, because we are the market guys. हम तो market में बैठे हैं sir. So that is the only basic reason. So I would request, if anyone is having any doubt, any question, or any queries, I would request to put up their hands, and I'm here to help you out in the best possible ways. So anyone wanna ask something, anything with respect to anything, I will be more than happy to answer. Thank you so much, sir. So it was a wonderful session, and actually the topic is, very new to, like a very worth discussing topic it is. So on the behalf of my team and all the participants, I convey thanks to you to join us on this podium and address all of us, sir. So Thank you. I have just given the access to all the participants to, they can unmute themselves and they can chat in the chat box also. So participants, if you have any question, please put in the chat box. Or you can directly unmute yourself and ask to sir as well. Yeah. Sir, we'll wait for like few minutes if anybody has any questions. Sure. No worries, ma'am. Yes, sir. Yeah, someone has Good dropped. evening, sir. Hello. Yes, sir. Good evening, sir. Very good evening, sir. Sir,
आपका सर लेक्चर एकदम बहुत अच्छा था, लेकिन सर मैं हमारे यहाँ एक थोड़ा सा सिस्टम लगाना है हाइड्रोपोनिक्स का। जैसे हम छत के मकान के जस्ट ऊपर है ना, छत के ऊपर लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए हमें परचेज तो मटेरियल परचेज करने के लिए क्या करना सर पहले चीज तो हमको एक समझ होनी चाहिए कि क्या करना। फॉर एन एग्जाम्पल, वी आर अ मैन्युफैक्चरर, तो ये एनएफटी है सर, हमारी तरफ सब पड़ा रहता है, दिस इज द एनएफटी चैनल, यू कैन सी। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो यस। 90 रुपीज पर मीटर से लेके 560 रुपीज तक मटेरियल अवेलेबल है, विच टाइप ऑफ द मटेरियल यू आर सपोज टू यूज। मार्केट में जाओगे वो राउंड पाइप दे देगा, पीवीसी में करोगे, पीवीसी इज नॉट अ फूड ग्रेड। क्लीन कैसे ओके सर। करोगे, लोग राउंड पाइप में करते हैं विदाउट गिविंग सेकंड थॉट, भाई इसको साफ कैसे करेगा, बिकॉज वो ओपनेबल तो नहीं, इट इज नॉट ओपनेबल, यू आर प्लेइंग विद वाटर, एल्गी और फंगस होगा। जस्ट कैन आई नो लाइक आप कौन से लोकेशन में हो सर, फ्रॉम विच लोकेशन यू आर? जोधपुर। जोधपुर। सर इंडिया प्योर का राजस्थान। बिगेस्ट, आई गॉट इट सर, इंडिया का बिगेस्ट प्रिसीजन फार्मिंग वी हैव मेड एट भीलवाड़ा। 200 एकड़ का फार्म बनाया है सर। जोधपुर में हाँ। इतनी गर्मी होती है छत के ऊपर, अगर समर में इट इज सिंस इट इज द टाइम ऑफ समर, गर्मी का टाइम है, टेम्परेचर 48 49 होता है, एंड छत है, छत इज कंक्रीट, कंक्रीट और तपेगा, तो 50 डिग्री में तो पानी खौलने लगेगा सर, क्या सरवाइव होगा फिर? आई वॉन्ट जस्ट एक्सपेरिमेंटल पर्पज। नहीं सर, तो अगर आपको छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करना है ना, छोटा आइडली मुझे एक्सपेरिमेंट पर्पज सर, में चाहिए। आपको 36 प्लांटर या 40 प्लांटर का आपने इंडोर करना चाहिए। इंडोर मीन्स व्हाट, अगर बाहर का टेम्परेचर ठीक रहेगा तो उसको शिफ्ट कर लूंगा, और इस कंडीशन में जबकि 50 डिग्री टेम्परेचर है उसको इंडोर रखूंगा, एंड इट इज हैविंग अ ग्रो लाइट। ग्रो लाइट क्योंकि आपके घर में एयर कंडीशन होगा, फैन होगा, अच्छा होगा, एटलीस्ट टेम्परेचर 35 के लगभग होगा, या 30 35 तक होगा, तो भी सर्वाइव हो जाएगा। बाहर का तो टेम्परेचर इज हिटिंग क्लोज टू 50। जोधपुर में एकदम तूफानी गर्मी पड़ती है। इन एडिशन टू दैट ठंडी भी जोरदार पड़ती है, ठंडी में टेम्परेचर 2 है, 1 है रात के समय, तो ट्रांसफर करके इंडोर कर लेंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे एनएफटी पे बात किया, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर एनएफटी यू शुड नो it should be food grade UPVC virgin plastic heavy metal free 100 by 55 dimension openable। इसमें नहीं जाएंगे तो आप एंड अप विद मेस हो जाएंगे सर। आपको सर वन टू ओके। वन भी जानना जानना रहेगा, यू कैन जस्ट टाइप प्राइस हाइड्रोपोनिक, यू विल गेट ऑन नेट, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी हेल्प रहेगा सर, आई एम हियर। एंड बाय चांस इफ यू वांट टू कम हियर एट अहमदाबाद, वी हैव आवर ओन R&D center, whether it is a net house, poly house, grow bag, grow slab, flatbed, A frame, Dutch bucket, container, indoor outdoor, we have our own fabrication unit। हम लोग ग्रो लाइट्स वगैरह भी बनाते हैं, वेवलेंथ पे वर्क करते हैं, तो एक पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं सर। लेकिन छत के ऊपर इस गर्मी में प्रैक्टिकली कुछ होने जाने वाला नहीं है। लॉट मेनी पीपल सेल से स्मॉल सेटअप के छत पे कर लो, ये कर लो, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मनी बना रहे हैं कि भाई तुम 5 10 हजार का कुछ लोगे, 2 3 हजार मेरा बन जाएगा, दैट्स व्हाट दे आर मेकिंग आउट ऑफ इट। और पानी सर घूमेगा, छत का टेम्परेचर 50 डिग्री है, क्या ही होगा सर, एंड ये फैक्ट है, हम भी किसी को हाँ बता सर। दे। और आपको ही पता, पानी घुमाओगे छत के ऊपर, इंसान 15 मिनट के लिए खड़ा नहीं रह सकता नंगे पैर, वो पानी तो खौलने लगेगा साहब। सो दैट इज द वन आप थिंग सर, अगर आप छोटा करना चाहते हैं, लीफी ग्रीन्स का कर सकते हैं, इंडोर करें विद ग्रो लाइट्स करें, दैट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। ये थोड़ा सा ग्रो लाइट का करें, क्योंकि एटलीस्ट बहुत गर्मी होगा, बाहर बरसात होगी, एक्सट्रीम कंडीशन होगा, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू ग्रो समथिंग। बट ओके इस सर। एक्सट्रीम नहीं, हाँ जब टेम्परेचर कंफर्टेबल होगा, आपका अक्टूबर होगा, अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तब चीजें होंगी। एंड इट इज नॉट, तो ये इंसेक्ट को भी बहुत है, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होना चाहिए, तो दैट विल बी द वन थिंग सर आई वुड लाइक टू टेल यू सर, कि थोड़ा सा नॉलेज कर लो सर, ताकि हम एनएफटी भी लेना तो पता तो रहे कि वो सही दे रहा है कि गलत दे रहा है। ओके सर। ठीक है साहब, थैंक यू सो मच सर, ओके ओके ओके, थैंक यू। द प्लेजर ऑल माइन सर। Someone has Thank you, dropped. sir. Thank you so much, ma'am. Good evening. Currently, I'm working on a hydroponic startup. As you tell us, we would learn first all the things, then we should absolutely. Someone has Jitesh Kumar Shubham. बहुत important है। बिना कुछ सोचे समझे लोग जंप करते हैं, and you know it sometimes feels very sorry। लोग सैफरॉन इधर इधर, थोड़ा सा उसका स्टडी करो, कितना लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कितना लगेगा, ROI कितना होगा, कहाँ बिकता है, एंड सो कॉल्ड लॉट मेनी पीपल जो है, इवन दे डोंट अंडरस्टैंड कि उसकी प्राइसेस कौन डिसाइड करता है। सी इफ समवन क्लेम्स कि चाय
500 में बिकती है। भाई तुमने 500 में लिया तो डजंट मीन कि चाय का एक कप 500 का है। दे क्लेम कि सर देखो हियर एमआरपी, भाई 5 स्टार होटल में 500 की हो सकती है, बट एज फॉर इंडिया इज कंसीडर्ड चाय इज फॉर 10 रुपीज ओनली। एक कप 10 रुपए का है। 10 आप किसी को 100 दे के आ जाओ, डजंट मीन कि उसकी कॉस्टिंग 100 हो गई है। आई वॉन्ट सजेशन ऑन यू, आई शुड स्टार्ट वर्किंग अवॉइड एनी इशू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी। आप पूछ सकते हैं सर, इफ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, यू कैन आस्क समथिंग इफ यू वांट आस्क। 5 मिनट में मैं जो बता पाऊंगा, आई विल ट्राई टू गिव अ वेरी ट्रांसपेरेंट आंसर टू यू सर। Chitesh, do you want to ask something? Hello. Yes, sir. I am from Satyan from Kerala. Yes, Shall I sir. ask you one question on again hydroponics? Go ahead, Maybe the sir. other person asked in Hindi and you replied in Hindi also. So whole thing was not clear to me. So Go almost ahead. the same question I am going to ask you. Like in Kerala also it's very hot. And during the summer, March, April, May is very hot. So is it possible hydroponics in polyhouses and all? Will it be possible in Sir, Kerala? The in temperature? sir, see, first of all, Yeah. we should understand one thing when you talk about the hydroponic, which type of a crop you're opting for. One is the leafy green, which are basic. Sorry, sir. We are Leafy, looking for leafy vegetables and also fruity like tomato and all that kind of things. Tomato and salad see, cucumber, that kind of things. See, the wine crops basically you can opt inside a poly house would be a bell pepper, English cucumber, and a tomatoes or a cherry tomatoes. Only these crops are having a self-pollinated seeds. So ये कर सकते हैं, and for this basically coco pit grow bag is one of the best option, and for the wine crop generally temperature control structures are not required. NVPH naturally ventilated poly houses are sufficient, but make sure their rolling curtain should be more at least 4 meter. Because maximum rolling curtain would be there, maximum air can come inside, and height should not be less than 6.5. Since people doesn't know the specification, 6.5 is he side made height. one. Pardon? 6.5 minimum. Side height or ridge height, which you are telling? Central height. Side height or the center height? Oh, okay. Center column 5. Center column is it should be of 5 meter plus 1.5, and the rolling curtain should be at least 4 meter, because in summer when it's hot the air comes via rolling curtain only. If you're opening the rolling curtain 4 meter, you are having a window on all the 4 direction, you will be able to survive in the best possible way. Then when it comes to the leafy green, temperature control polyhouse is compulsory, and height should not be more than 4.5 meter. If you are making a, because it is absolutely closed, it is a temperature control, so it is not having a vent on top. Height should not be more than, and the distance from exhaust and poly pad should not be more than 20 meters. So if you're having a structure of say 560 square meter, it is somewhere about a dimension of 28 by 20 meter. So the more you are having a distance from exhaust fan and poly pad, temperature control won't be possible. So you should give up thought in this way. So in a short, that only I can explain. Rest it is a long topic, sir. Yeah. And Yeah, I will we may be, a lot of people are asking a number of things. Good evening, sir. Currently, I'm working on hydroponic, as you told, this hydroponic detailed learning. Yeah. So I can do one thing. You can just come drop a message on Rise Hydroponic, or if someone needs some number, you can take from Just Agriculture. And we're here to help you out in the best possible ways. Anything else, if someone wanna ask, I will be more than happy to help you in a quick way. Regarding any crop, viable and not viable, whatever the doubt you come, since here we basically try to identify the crop which are viable. और कहीं भी doubt होता है तो we on face only we say कि भाई मत कर ये सब काम, because it is hard earned money. Anyone wanna ask something? Yeah. I have one question in my DM, sir. Go ahead. It's the question from B. Daniel. So it is the question is, sir, how to select market demand crops, sir? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम वी शुड अंडरस्टैंड हम करते कहाँ पे हैं. आप बहुत शॉक्ड हो जाएंगे, पीपल इवन डोंट नो. फॉर एन एग्जाम्पल, lot of people are standing. Can I ask something from you guys? Suppose a lot of people get excited with respect to saffron. हम ये करेंगे, मसाले करेंगे. इंडिया में who basically decides the prices of spices? स्पाइस का प्राइस डिसाइड कौन करता है? I'm asking a question. कौन बताएगा? There are the, I believe 170 participant है. If someone is opting for, suppose you told I will be doing a business of saffron. I'm sure you must have seen a number of videos of saffron on a YouTube, and ये सब भरे पड़े हैं.
क्या है कॉस्ट कितना, सपोज मैंने कहा 2 लाख, कोई 5 लाख, बट हु इज डिसाइडिंग 5 लाख डिसाइड कौन करता है? एनीवन? 170 लोग हो भाई, सब एंटरप्रेन्योर बन रहे हो। अरे कोई तो बोल दो। क्या मैम? ओके, नो वन। So first of all, ma'am, we should understand the seed supply or demand clear. You should go to the central market. For example, all spices in India, all dry fruit in India. कौन dry fruit का भी market decide करता है भारत में? Anyone? कोई बोलना चाहेगा? Someone has given on comments on chat by government of God. ये कौन बोल रहा है भाई? गवर्नमेंट। भाग्य राजेश कुमार। अरे शाबाश, गवर्नमेंट सर। गवर्नमेंट से पूछो ना सर, लोकार्नो का क्या प्राइस है? लोकार्नो, रेडो, ग्रीनो, केल, सेल्स, थाइम, बटरेड, नाम ही नहीं सुना है सर किसी ने। यू शो मी एनी एजेंसी। नफाड। शाबाश। सर दिल्ली, दिल्ली से कौन है यहाँ पे? हु इज फ्रॉम दिल्ली? हु इज फ्रॉम दिल्ली? दिल्ली एनसीआर। देयर द प्लेस इन क्लोज टू चांदनी चौक, CACP। ओके, पता नहीं ये कौन कौन से इंस्टीट्यूट है। देयर द प्लेस इन दिल्ली एनसीआर सर, खरी बावली, चांदनी चौक स्टेशन से 1.5 किलोमीटर पे है। इट इज एशिया बिगेस्ट मार्केट। मार्केट डिसाइड करता है। इफ यू आर डीलिंग विद द क्यूमिन, देयर इज द प्लेस इन गुजरात, जस्ट इट्स फ्रॉम द Unjha. Just type it out, Unjha. If you are on a phone, Google पे just type Unjha, UNJHA, Unjha. Asia's biggest cumin market. तो these people basically decide। सब्जियों का कौन डिसाइड करता है? आजादपुर मंडी। रात को 2 बजे रेट खुलता है। बेल पेपर का क्या रेट होगा? गवर्नमेंट डजंट डिसाइड, आजादपुर मंडी वाला डिसाइड करता है। मार्केट 2 बजे खुलता है, पता ही नहीं हमको। हम फार्म खोल रहे हैं, कौन डिसाइड करता है? वही नहीं पता। सो बेसिकली वॉट एवर यूर ओपनिंग, उसका सबसे बड़ा सेंटर, बिकॉज देर द मंडी की एक खासियत होती है, देर द ब्यूटी ऑफ अ मंडी। मंडी में कचरे से लेके सोना तक सब बिकता है। दैट इज द मंडी। मोस्ट पैथेटिक प्रोडक्ट से, इफ यू विल गो आजादपुर मंडी, बेल पेपर के जूस बनाने वाले, उसकी चटनी बनाने वाले, अगर बेल पेपर सड़ गया, फट गया, कुछ हो गया, दे बाय एट ए प्राइस ऑफ 15 रुपीज पर किलो। कचरे से कचरा माल लेके दे विल मेक चटनी वटनी बना के बेच देते हैं। दीज पीपल बेसिकली विल फाइंड इन द मंडी ओनली, विल नॉट फाइंड इन। अब यो बोले सर बेल पेपर तो हमारे पड़ोस में 350 में बिकता है। भाई तुम 500 में ले लो, तो मैं क्या करूं उसके लिए? because if you're having a one truck माल, तो वो so basically how to decide simply जो उसका, because whenever we do anything, तो basically we decide कि भाई let's do one thing। इसका सबसे बड़ा मार्केट प्लेस क्या है? we should go at that given point of time। और हम फैंसी लोगों से बिल्कुल बात नहीं करते। यू गो टू द मंडी, आम का क्या भाव है? कुछ नहीं, आजादपुर मंडी जाओ, 2 मिनट में पता लग जाएगा कि सर 1 ट्रक माल खरीदना है, 20 टन माल चाहिए होलसेल में, टेल मी द रेट, यू विल कम टू नो। एंड ऑलवेज डू दिस सर्वे विथ योर सेल्फ, खुद पैरों से जाके करो। डोंट बिलीव, क्योंकि लोग मिसलीड कर सकते हैं। आपने खुद नहीं किया तो खुद को कैसे मिसलीड करोगे भाई? हाउ यू कैन मिसलीड योर सेल्फ? दैट इज द थिंग आई विल सी। इतने लोग कर रहे हैं, बट मैं खुद डबल श्योर हूँ 174 लोग पार्टिसिपेंट हैं, 170 ने खली बावली सुना ही नहीं होगा। I will request you, ma'am, if you're having a phone in your hand, just type it out, खरी बावली। 2 सेकंड में पता लग जाएगा ये क्या है। गूगल आउट कर लो, आजकल तो फोन सभी के पास है, मेरे पास भी है। बात करते करते चेक कर लेंगे क्या है। जस्ट टाइप इट आउट, खरी बावली, KHARIBAOLI। यू चेक इट आउट, क्या आता है? होलसेल प्राइसेस। प्रीति मैम, कुछ और जानना चाहेंगे आप? You are No, on sir. mute. Actually, this was a question from one of the participants, B. Daniel. Okay. So I hope that answers to Mr. B. Daniel. And I searched, sir, on the Google. Yeah, it is showing it is Asia's largest wholesale dry fruit market, Kharibawali, sir. See, shocking चीज क्या, हम दिल्ली में we have not heard even about it। भाई Yes, वो sir, एशिया yes. की सबसे बड़ी मार्केट है, चलो हमें पता ही नहीं है। Yes, We are डिपेंड ऑन द रामलाल, मेरा ग्रोसरी वाला। भैया कितने में दोगे काजू? 1000। अबे तुम 5000 में लेके आओ, देन आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एशिया बिगेस्ट मार्केट विल डिसाइड व्हाट इज द प्राइस। It's not you and it's not me। So people basically don't hear, they
वो थॉट प्रोसेस ही नहीं है। कोई पड़ोसी कर रहा है कट कॉपी वाला हिसाब किताब है साहब। तो मैंने Yes, sir. रेड रिटर्न संकेत एशिया लार्जेस्ट मार्केट, अब तो मैडम ने बता ही दिया, प्रीति मैम ने। तो so that is one thing. Yes, anything else? It's I think, sir, I do not have any questions. Do you have in your chat box, sir, any questions? कईयों ने बहुत कुछ लिखा है। वेरी इंफॉर्मेटिव पर्सन, प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर। डॉक्टर योगेश, इफ एनीवन नीड्स अ कॉन्टेक्ट नंबर, जस्ट इफ यू हैव अ पेन एंड पेपर हैंडी, इट्स 7575809577। Sir, 757580 9577. It's my number. 9577. Okay, sir. Yeah. So if you are having any I doubt, just shared it too. yeah, if you're having any doubt with respect to anything, and see, I am not a lecturer. हम लोग बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, एक बहुत फैंसी बात नहीं करते, ये कर लो वो कर लो, बिकॉज उसमें पैसा लगता है यार। इफ यू आर पुटिंग अ 1 acre of farm, it is cost you somewhere about 65-70 lakh rupees, and without knowing the in and out of the things, basic of the things, if you are making a putting a money, you will end up with a mess. It is the agriculture class, agriculture entrepreneurship we are talking, agripreneur, and people are not knowing the Asia's biggest market. तो भाई किस बेसिस पे तुमने डिसीजन लिया विथ रिस्पेक्ट टू योर किराना स्टोर? आपके घर के बाजू में किराने वाले ने बोला ये भाव है, तो उसके ऊपर से डिसीजन लिया क्या? So this is the process basically we should, otherwise people will end up with the mess. एक hard earned money will be spoiled like anything, निकल जाएगा हाथ से। पैसा मेहनत से बनाते हैं, आपने बैंक लोन लिया, ये लोन लिया, कैसे भरोगे? And there's one more. Good evening, sir. Currently, I'm working on a hydroponic startup. As you told us, we should learn things. Absolutely, Jitesh ji, समझना चाहिए. See, there's nothing like good and bad. And then we basically blame the system. ये नहीं है, वो नहीं है. भाई हमारी खुद की स्टडी नहीं है. That is only one thing. We don't have our study. And then basically we start blaming. So stop blame gaming. सीखो, चीजों को सीखो, चीजों को समझो, अच्छे से समझो, बेस से समझो, अंडरस्टैंड द कंपोनेंट। और एक सवाल कभी मत किसी से पूछना कि 1 एकड़ कितने में बनता है, बिकॉज प्राइसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंपोनेंट। व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन, ही अंडरस्टैंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कंपोनेंट। एक घर कितने में बनता है, व्हाट इज द आंसर ऑफ इट? एक घर कितने में बनता है भाई, डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट। आपको टाइल चाहिए, अमेरिकन टाइल चाहिए, इटालियन टाइल, कोटा स्टोन, मार्बल, संगमरमर, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, डिपेंडिंग ऑन द कंपोनेंट कॉस्ट वुड बी देयर। सो देयर इज नथिंग लाइक सम एक फ्लैट मेरे हिसाब से 5-10 लाख से लेके 5-10 करोड़ तक का भी हो सकता है। तो जब इतना वेरिएशन है, तो व्हाई बेसिकली वी आर आस्किंग अबाउट द कॉस्ट? एंड इफ यू टॉक विथ रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट, सामने वाले को लगता है ही इज द इंटेलेक्चुअल पर्सन, आई कांट मेक हिम फूल। And if you don't talk with respect to component, he understand within a fraction of second. He or she doesn't know anything. Let's make them fool. Lot many people have grown the leafy green in Delhi NCR in a net house. Net house में सर सस्ते में हो जाएगा, because you know you people are not knowing anything. क्योंकि पैसा तो आपका लगा है, आपका नहीं उगेगा। It's you who is going to suffer, not he. जैसे सर को जोधपुर में लगाना है, जस्ट टू गेट अ मनी आउट ऑफ इट, सर छत पे लगा दो। भाई जोधपुर में पानी खोलने लगेगा 50 डिग्री पे, तो क्या होगा? तो ये क्यों उनका हेडेक है। टाइम इज रनिंग आउट। जितेश जी को कुछ पूछना है मैम, इफ यू परमिट, इट्स एब्सोल्युटली योर कॉल, इट्स योर शो। मैं तो कुछ कमेंट नहीं करूंगा। ही हैज बेसिकली raised up Sir, a I hand. have given your contact number in the chat box, and we will No worries, circulate your ma'am. email address. Yeah. No worries, no If worries. anybody wants to connect it to you, because sir, it's a time bound I do thing, you know. understand, ma'am. I do And actually, understand. बहुत time हो गया। yes, sir. Okay. Yes, sir. No, sir. Actually, your way of presentation is very nice, sir. We can listen to you the whole day, sir. But since it is the time is bound, so we need to close it and move to the next session. This is what actually it is. No worries, ma'am. I am so sorry if I was Yes. harsh, because I am not a No, sir. lecturer, No, sir. professor You नहीं। हम wasn't, तो sir. You wasn't, हम sir. तो बहुत ट्रांसपेरेंटली बात करते हैं भाई, ऐसा था, Yes, because sir. it's not okay, ma'am. Thank you so much. Thanks for inviting. Take care. Have a blessed day ahead. Okay. Thank you so much, sir, for joining with us. Thank you once again. Same here. The pleasure all mine, ma'am. Thank you so much. Yeah. Thank you, sir. So, dear participants, let us move to the next session. So, for the next session, we have with us Madam Mani M. So, ma'am, are you there with us? Yeah, I'm here. Can you see me? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Right. Yeah. Hi. Ma'am, before I invite you to deliver your talk, ma'am, I will just give a brief introduction about you to all our participants, ma'am.
So, dear participants, we have with us Madam Mani M, who is an innovation lead at ICR IERI's Pusa Krishi. Ma'am is an agribusiness expert possessing a vividly rich experience of more than a decade in the startups ecosystem, business development, business incubator management, and technology commercialization. With prior experience working in the World Bank Tech Commercialization and NABARD's incubator, ABIC as CEO, now she's leading the ICR's IERA ecosystem of entrepreneurship as the lead innovation expert. Multiple certifications and honors ma'am is having, including the Best Incubator Award by Minister MOFPI, Government of India, Women in Business Award appreciation by NABARD itself. Ma'am's mission is to foster the incubation ecosystem in India and enable the growth of innovative and impactful agripreneurs. Ma'am has successfully generated leads, launched public-private partnerships, advised state governments in CSR initiatives, and helped establish 7 business incubators pan-India. She has also contributed to the establishment of 50+ successful startup brands in agribusiness sector, socially impacting hundreds of lives. She has represented India's business incubators as an invited speaker in the Europe and Hong Kong, and published several books and book chapters, research papers, and columns in the agribusiness incubation. So, ma'am, Team Just Agriculture welcomes you to the digital platform of ours. We are honored to have you join us today with us, and we are eagerly anticipating your insightful talk, ma'am. So, therefore, I request you to join us on this platform and address all our participants. The platform is all yours, ma'am. Okay, thank you, Preeti, for such a vast introduction. That wasn't needed. Okay, first thing first, like, can you see me? Because I don't know, my camera isn't working or what. No, ma'am, we can see you, ma'am. Okay, wait, maybe I'll just give me a second. I'll rejoin because I cannot see the whole screen. I can just see you and like a few startups. Wait. I'll just join back. Okay, ma'am. Ma'am, if you're saying something, please unmute yourself, ma'am. You're muted. You're mute, ma'am. Please unmute yourself. Ma'am, it's there in the left bottom corner of your. I know where Yeah. is the button, Okay. but it was showing that host has not allowed to unmute. Okay. Was it like that? It's I was even trying to chat this to you, but chat was also disabled. So yeah, I was just doing the signals. Anyway, all right. So thank you, Preeti, again, and I would like to thank Utkarsha for inviting me again because I have been a part of this international training program, I think last year as well. So thank you one and all for being a part of this wonderful initiative by Just Agriculture. These guys have been doing really great in the field of agri and allied sectors. I would definitely, I mean, it's a commendable job, I would say. Okay, so to start with, I would like to tell all of you that today I'll be talking about, I'll actually not just talk about, I'll take you through a journey of agriculture entrepreneurship through a phase of business incubation, like how business incubators work and what kind of agri entrepreneurship you can venture into, and what are the various funding schemes that are available from the Government of India, and what are the various other things that you can explore while getting on this journey of entrepreneurship. So if I'm allowed to share my screen, wait, I'll just check. Yeah, I think I can. Okay. Can you see the screen? Yeah, ma'am. It's visible, ma'am. Okay, so I'll put on slideshow. So right. Okay, one more thing, Preeti, that I'd like to know is that should I keep like a mix of Hindi and English, or maybe English? Or maybe yeah, ma'am. It'll be better, I think, if it is Hindi and English mix, ma'am. Right. Okay. Yeah. Okay. Thank you again. So right. Thank you. So entrepreneurial ecosystem competencies and efficacy. I'll be talking about all about ki entrepreneurship, यानी कि खुद का अगर हम startup करना चाहते हैं in agripreneurship, in agriculture or any allied sector. So how to do it and what are the various
things that you should take care of, right? So basically, like, I think already people must be knowing about entrepreneurship. क्या है कि startup करना है, who can be an innovator or entrepreneur? Farmers हो सकते हैं, students हो सकते हैं, even the people who are into business, who are already into some professional jobs. Anybody can be an entrepreneur. It's all about you have to have the zeal to be an entrepreneur, right? So I'll take you through a simple journey. So these starters, when we say like people want to start their business, so instead of becoming a startup first, they become a starter first because they're starting a venture. They're thinking about an idea. So these starters to become more entrepreneurial, some kind of assistance is also needed. So these, which can be got through training, some kind of lessons, maybe some lectures, or maybe attending some conferences, because they have to understand what is the need of their startup idea, what is the pain point that they want to address. And that's in this whole scenario, the agribusiness incubation centers come into the focus. But because when we are talking about agri-entrepreneurship, we are talking about agribusiness incubation. When we're just talking about simple startups, like any sector agnostic startups, so there comes the incubation center. But now we'll be focusing about agribusiness incubation. So when I say that, I also want to make all of you understand that there are no opportunities that cannot be counted as an agribusiness opportunity. Like, look around you, the cold drink you may be just having, the tea you may be just having, right? The cookies that you're having, anything which is related to food processing around you, that is an agribusiness opportunity, right? Again, coming back again to the fact that the clothes that you're wearing, right? So unka raw material, unka input kahan se aaya, that has also come from some sort of agri and allied sector, right? And then when you look around other things, कि अभी तो things are not just, agriculture is not just kheti badi anymore. It's not just the cultivation and harvesting of crops anymore. It has become such a massive and such a big market. And still today, like if I would have to give you some numbers in that, I'll take you through that slide as well. But when we talk about agriculture as like per se of a part of economy of India, so I mean till date, it really accounts for almost 2/3 of the whole economy. So because indirectly or directly, still people like 66% to 68%, it keeps changing as well. So it still depends on agriculture, because agriculture is not just like I told you, not just the cultivation and harvesting of crops. Now AI applications are there. Now IoTs is there. Now drones are there. Now we are not just talking about SaaS. We are also talking about FaaS, which is farming as a service. So I'll take you through that as well. Okay. So when we talk about entrepreneurships, like what are the stages the person, if somebody has an idea, right? Say for an example, I have an idea कि मेरे को कोई business या कुछ एक startup शुरू करना है. So the first stage is called the dreamer. The person dreams about getting a startup, getting into being his or her own boss, कि खुद का venture शुरू करना है. ठीक है? So this is the stage where these ideas are actually born. तो ड्रीम जो है, ड्रीम इज अबाउट कि हमारा लाइफ एक्सपीरियंसेस से या फिर हमारा पैशन से हमने अंडरस्टैंड किया कि मे बी इस एरिया में मैं स्टार्टअप कर सकती हूँ. तो क्या होता है कि दिस कम्स एक्चुअली if you talk about sustainable business ideas, they actually come from your own surroundings. जैसे कि हम कहीं पे जा रहे हैं, let's say for an example, let's talk about Zomato and Swiggy, कि हम कहीं पे हैं और हमने सोचा था कि आज से अगर हम बात करते हैं 12-15 साल पहले की, so people would have thought of कि मैं घर बैठे बैठे एक पिज्जा ऑर्डर कर सकता हूँ, मैं घर बैठे बैठे ऐसे कर सकता हूँ. तो जिस आदमी ने सबसे पहले सोचा होगा, लोग उस पर हंसे होंगे, राइट? उसके वो ड्रीमर वाले एटीट्यूड को तोड़ने का कोशिश किए होंगे, बिकॉज पीपल वुड हैव थॉट ऑफ ऐसे थोड़ी होता है यार, वो तो रेस्टोरेंट में जाके ही खाना पड़ता है आपको, या फिर अगर कुछ जाना भी तो जाके पैक करा के लाके आना पड़ता है. ठीक है? तो देयर वाज नॉट एनी फैसिलिटी लाइक जोमेटो स्विगी. और अगर ये तो फूड डिलीवरी एप्स है, अभी तो हम देखते हैं कि ग्रोसरीज की इतनी सारी एप्स आ गई हैं. Blinkit has been a major player in that. Swiggy has been also one of the Instamart करके उनका है option which brings you groceries at home. And now also Zepto is growing a lot. तो ऐसे करते करते बहुत सारे हैं. Dunzo है, then other people are also introducing their own apps into that. तो करते करते हम देख रहे हैं कि these things which were a dream someday back, maybe a decade ago, now they are like full-fledged unicorns, and some of them have also become unicorns as well. ठीक है? तो दैट इज द स्टेज 1 व्हेन यू थिंक अबाउट लाइक कि मैं ये आइडिया पे बिजनेस करना चाहता हूँ. स्टेज 2 इज व्हेन यू फ्रेम दैट आइडिया इनटू अ स्ट्रक्चर, सो दैट मेक्स यू एन आर्किटेक्ट. सो दैट मीन्स व्हाट, कि उस ड्रीम को आपने एक बिजनेस मॉडल के रूप में, आपने उसको एक कैनवस दे दिया, आपने उसको एक ब्लूप्रिंट के रूप में बना दिया, राइट? सो दैट मीन्स दैट इज लाइक ग्रेडिंग अप, लाइक स्केलिंग अप योर ओन आइडिया. कि आप अब एक स्केल 1 से स्केल 2 पे आ गए. नाउ यू आर द आर्किटेक्ट, यू हैव लाइक अ ब्लूप्रिंट कि मैं ये करना चाहता हूँ.
लेट्स से फॉर एन एग्जांपल किसी ने सोचा कि मेरे को बेकरी में कुछ करना है, ठीक है, तो फिर उसने देखा कि क्योंकि उसको हो सकता है ये आइडिया कभी आया हो कि उसके नानी बहुत अच्छा कुछ बनाते थे घर में, राइट, तो उन्होंने सोचा कि हाँ यार मैं भी इसको कुछ सोच सकता हूँ, इसमें कुछ फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस करके आई कैन इंट्रोड्यूस समथिंग, एंड दैट्स हाउ दिस लास्ट ईयर लाइक मिलेट ईयर था हमारा, तो दैट्स हाउ वी वर इंट्रोड्यूस टू अ मिलियंस ऑफ स्टार्टअप्स लास्ट ईयर फॉर जो मिलेट्स में फोर्टिफिकेशन लाके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे थे, विच वर एक्चुअली ऑल्सो प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोदी जी ने फुल इंट्रोड्यूस किया था मिलेट्स को, राइट, ठीक है, तो अब उसको आइडिया को जब सोच लिया कि हाँ मुझे ये बनाना है, नाउ दैट पर्सन हैव थॉट कि मैं इसको मे बी पफ बना सकता हूँ, मे बी आई स्टार्ट विद जैसे वो जो नटखट आते थे पुराने जमाने में वैसा वैसा, राइट, देन दैट पर्सन वुड हैव थॉट ऑफ कि मैं इसका फ्लेक्स बना सकता हूँ, मैं इसकी कुकीज बना सकता हूँ, एनीथिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फूड प्रोसेसिंग हियर, अदरवाइज बहुत सारे सेक्टर्स हैं, इट कैन बी एनी वेटनरी प्रोडक्ट, इट कैन बी एनी लिक्विड बायोफर्टिलाइजर्स थिंग, इट कैन बी सोइल टेस्टिंग थिंग, इट कैन बी एआई सेंसर्स दैट टेस्ट क्रॉप मॉनिटरिंग, आपको सोइल मॉइस्चर देखना है क्या करना है, एनीथिंग, तो उसने उसको जब उसको एक आकार दे दिया, दैट मेक्स द पर्सन एन आर्किटेक्ट। Third stage is the builder. When you start working on developing a prototype of that particular idea's MVP, let's call it MVP, minimum viable product जब आप बनाने लगते हैं, तो जब आप उसका प्रोटोटाइप बनाने लगते हैं, तो दैट इज द थर्ड स्टेज where the dream becomes the reality. The builder, अभी जो उसने अपना सोचा था वो आर्किटेक्चर से बिल्डिंग पे आ गया, कि अभी जो उसने पेपर पे स्केचिंग किया था या जो उसने थोड़ा बहुत सोचा था कि मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ना उसको दैट थिंग इज गिवन इनटू अ स्ट्रक्चर। सो अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो कोडिंग से लेके अब आप उसको ऐप को लाइव करने वाले हैं, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट हार्डवेयर, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो एक फीजिबल फॉर्म में, एक टचेबल फॉर्म में आ गया है, राइट, एंड देन बिकम्स द कल्टिवेटर। कल्टिवेटर इज द ग्रोथ स्टेज, कि आप इसको पूरा पूरा मार्केट में लॉन्च करेंगे एंड देन you will just try to reap the benefits out of it. This is the most important stage. Actually, सारे ही stages important है, but this being the most important because when you hit a market, you get to know the realities of actually starting a business, right? तो वहां पे बहुत सारी चीजें change होती हैं. So this is the growth phase. So हर कोई भी स्टार्टअप के लिए ये 4 phases, 4 stages ही होती हैं. So when we talk about agriculture में, तो agriculture में opportunities कहाँ पे हो सकती हैं? So opportunity can be into cultivation, ठीक है, cultivation खेत से जुड़ी हुई चीजें, फिर देन इट कैन बी इनटू पोस्ट हार्वेस्ट, जब आपकी हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद में, सो इट कैन इंक्लूड इनसो, जिसमें इंफ्रा को भी हम काउंट भी कर सकते हैं कि स्टोरेज भी आ जाएगा, सप्लाई चेन भी आ जाएगा, राइट, देन इट ऑल्सो कैन बी अ पार्ट इनटू R&D, जिसमें हम अब देखते हैं कि जो अभी नए तरह के एप्लीकेशंस आ रहे हैं, सो दैट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड देन लास्ट इज सर्विसेज। अब सर्विसेज में लाइक आई ऑलरेडी सेड कि फार्मिंग एज अ सर्विस भी आ गया है, right, so these also are a few things that can be like, these are the major sectors जहाँ पे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में आप एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इकोसिस्टम कैसे बनता है। सो इकोसिस्टम इज नथिंग बट द होल स्ट्रक्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, प्रेफरेंस एंड ऑल्सो बूस्टिंग इट। तो इसमें सारे के सारे फैक्टर्स आपके आएंगे, इसमें आप जो स्टार्टअप करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे, इन्वेस्टर्स रहेंगे, मेंटर्स रहेंगे, यूनिवर्सिटीज या अदर ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी जो कि उनको एकेडमिया में भी हेल्प करेंगे, बिकॉज सम पीपल आर ऑल्सो लिटरेट इनफ टू गेट टेक्निकल आइडिया, तो यूनिवर्सिटीज के इंक्यूबेटर्स के थ्रू भी वो सपोर्ट मिलता है उनको, एंड देयर आर सम गवर्नमेंट एजेंसीज जहाँ पे उनको फंडिंग के लिए भी हेल्प मिलती है, बिजनेस स्केलिंग अप के लिए भी हेल्प मिलती है। अगर रिसेंटली समबडी हैज फॉलोड, अभी हमारा स्टार्टअप महाकुंभ हुआ था, तो गवर्नमेंट एजेंसीज ने उसको ऑर्गेनाइज किया था, एंड इट वाज अ मैसिव ग्रेट सक्सेसफुल इवेंट फॉर द लाइक कंडक्टेड बाय द होल गवर्नमेंट एजेंसीज। तो वहां पे सभी अपने स्टार्टअप्स पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए थे, एंड देन वी हैव सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा भी बहुत सारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जस्ट लाइक let's say social alpha is there, let's say will grow is there, right? So these people are also supporting the startup ecosystem. So all of them they work together ताकि एक ऐसा माहौल बन सके कि लोग स्टार्टअप करना चाहें। एंड आई विल टेल यू लाइक ये चीजें पिछले आई वुड से लाइक लास्ट 15 to 20 years में बहुत ज्यादा ग्रो की है। एंड पोस्ट 1991 एक्चुअली जब हमारा LPG, हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, उसके बाद से ये चीजें बहुत मैसिवली बढ़ी, और पिछले 15-16 साल से तो काफी अच्छा हो गया। और आई थिंक पिछले 8-9 सालों में तो this startup ecosystem has become like one of the strongest pillars of Indian economy. I'll take you through that as well. अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। जब हमने बात की सारे एक्टर्स एंड प्लेयर्स की बात की, तो इनके अंदर ये तो थे एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनली व्हाट आर द थिंग्स दैट drive you as an entrepreneur? So this is like, first is culture and mindset, then is what kind of talent do you have, how much capital do you have, how much capital can you raise, then what are the infrastructure that you already possess, and what are the infrastructure that you can explore to be possessing. उसको आप रेंटल मोड्स भी अब आ चुके हैं, तो रेंट पे भी ले सकते हैं।
and what are the support services that are available in your region or in your country, and what are the regulations and policy, how liberal is your government regarding startup, कि इसके लिए कैसा है, ठीक है. So thankfully our government is very supportive for the startup ecosystem, right? Okay, so next is when we started agri business. Okay, तो हम start जब करते हैं agri business, I think somebody has written something in chat, please speak to explain English. मैं हिंदी में बीच में बोल रही हूँ, I think I'm trying to make myself very clear, but मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मैं हिंदी ज्यादा बोलूं कि इंग्लिश ज्यादा बोलूं? No, ma'am. I think the person is from Kerala, I think. So, like the sir is trying to say, like, can you please speak in English or like that? So maybe like you can keep Okay. more of English then. Okay. Yeah. All right. Cool. Right. So when we talk about starting an agri business, so first thing first comes to our mind is that कि ठीक है, हमने ये सोच लिया कि ठीक है भाई मेरे को बेकरी का काम करना है, या मेरे को let's say ऑर्गेनिक कॉटन में शर्ट्स बनाने का काम करना है, और मे बी लेट्स से मुझे लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स का काम करना है, और मे बी लेट्स से मुझे एक ऐसा रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूशन के लिए एक ऐसा छोटा सा एक डिवाइस बनाना है, वट एवर इट इज, ठीक है. उसके लिए एक बिजनेस प्लान होना बहुत जरूरी है. जो भी आपने प्रोडक्ट सोच लिया उसके बाद में आप उसका बिजनेस प्लान बनाएंगे कि ठीक है, these are the funds that I have, this much fund that I will be requiring, these are my milestones and how will I achieve these things. तो वो पूरे के पूरे आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, आपके बिजनेस का मिशन एंड विजन रहेगा, then there will be a business plan, and then you will estimate कि पूरा पूरा आप उसका हिसाब लगाएंगे कि what kind of resources you already have and what kind of resources that you will be requiring more, right? So even if you are not an expert on equipment, products, grains, soil, seeds, plants, इन सब में आपको कंसिडर जब करते हैं, इन चीजों को देखते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास वो इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए, एक सॉलिड बिजनेस प्लान बनाने के लिए यू शुड हैव एवरीथिंग ऑन अ पेपर. एंड देन ऑल्सो द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द राइट टीम, राइट? ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दिस इज द बेसिक प्रोसेस. पहले आप मार्केट रिसर्च करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लेट्स से अगेन बेकरी वाला एग्जांपल, कि मेरे को पता है कि मेरे को बेकरी शुरू करनी है, तो I'll go and search about the market कि कितने तरह की बेकरी के ऑलरेडी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कितने तरह की उसमें से उनकी मार्केट कैसी है, आर दे ग्रोइंग और नॉट, व्हाट काइंड ऑफ मार्केट कैन बी माई निश मार्केट. निश माने एकदम पर्टिकुलर सेगमेंट कि मेरे को इस मार्केट के लिए बनाना है, तो वो कैसे हो सकता है. एंड देन मार्केट रिसर्च करने के बाद देन यू क्रिएट अ बिजनेस प्लान, विच आई ऑलरेडी सेड, ये बिजनेस प्लान क्रिएट करेंगे. एंड देन यू विल हैव फंडिंग, कि मेरे को पैसा देखना है कि मेरे पास कितना पैसा है एंड हाउ मच मोर फंड्स डू आई रिक्वायर, और उस फंड्स के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. मैं डेट में जा सकता हूँ, इक्विटी में जा सकता हूँ, ग्रांट्स में जा सकता हूँ, दैट यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लोर. एंड देन उसके बाद आपको देखना है कि आपके बिजनेस के ऊपर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फॉर एग्जांपल अगर फूड का है तो आपको एफएसएसआई का लाइसेंस, फसाई का लाइसेंस लेना है कि नहीं, आपको एचएसीसीपी का लाइसेंस लेना है कि नहीं, आपके दूसरे बिजनेसेस में तो वहां पे आपको लाइसेंसेस जिस तरह के लगते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे. एंड देन लास्टली यू हैव टू रजिस्टर योर बिजनेस. आपको एक बिजनेस एंटिटी रजिस्टर करना पड़ेगा. इट कैन बी एन एलएलपी, इट कैन बी प्राइवेट लिमिटेड. वो आपको देखना है कि आपको कौन सा सूटेबल है, पार्टनरशिप में जाना है, कैसे करना है. एंड इफ यू हैव टू बी अ स्टार्टअप तो डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके लिए एटलीस्ट एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, राइट? एंड देन ऑल दीज लाइसेंस एंड अरेंजमेंट्स यू विल डू, एंड फाइनली योर स्टार्टअप विल बी कॉल्ड अ स्टार्टअप एज पर दी डीपीआईआईटी गाइडलाइंस. That is the Startup India का पूरा policy, right? So when we talk about agriculture, so agriculture, the ways agriculture can affect your life is that cosmetics I already said. अच्छा, cosmetics की मैंने बात नहीं की. Cosmetics की बात, when we talk about cosmetics, if I have to ask anyone from the audience, so can someone tell me कि cosmetics how is cosmetics a part of agriculture? Can it be a part of agriculture? I'd like to know if somebody can talk. Or maybe chat. Banana powder used in makeup. Yes, awesome. Thank you, Harshal. Any other example if anybody would like to talk? Aloe vera gel, beetroot powder, right? I'll also give you one good example as well. हाँ, input material में ठीक है, but cosmetics is a word. या पपाया का है, ऐसे तो बहुत सारे सी इंग्रेडिएंट्स उसमें वो बोलते हैं ना कि जैसे कि आई डोंट वांट टू नेम एनी कंपनी, बट बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ये मल्टीग्रेन आटा है, बट इफ यू इवेंचुअली लुक फॉर द इंग्रेडिएंट्स उसमें 2 या 3% ही मल्टीग्रेन होता है, ठीक है? तो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्मेटिक्स में एग्रीकल्चर का इनपुट,
तो वो आपको बोल देंगे कि इसमें हनी है, एलोवेरा है, ये है, वो है। वो एसेंस होता है ज्यादा से ज्यादा 3 या 4%। अगर आप उसको पीछे पलट के भी देखेंगे ना, वहां पे भी बातें घुमा के ही लिखी होंगी, राइट। बट व्हेन आई टॉक अबाउट कॉस्मेटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जो हेल्थ ओरिएंटेड, केमिकल फ्री नए तरह के कॉस्मेटिक्स भी आ चुके हैं मार्केट में, राइट। सो आई मीन केमिकल फ्री व्हेन आई से, ऐसा कोई भी कॉस्मेटिक या ऐसा कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं होता जिसमें केमिकल्स नहीं होते। बट बशर्ते कि वो जो केमिकल्स अभी यूज होने लगे हैं वो हार्मफुल नहीं होते। सो दैट इज लाइक, यस, somebody said like plant based therapeutics, yes, very true, right? So if somebody is using essential oils from the extraction of flowers and then using binding के लिए उसमें एकदम ऐसा, because I have one idea of a startup, she was doing very good, and she is now moved to US, उसने इतना पैसा कमा लिया, now she has a full fledged business in US as well, right? तो I'll tell you something कि उन्होंने क्या किया, द फ्लावर्स दैट वी अर्पण करके आते हैं मंदिरों में, तो वहां से वो बिल्कुल ही वेस्ट वाले 3 तरह के ग्रेडिंग के फ्लावर्स लेती थी। एक तो वो क्या करती थी, जो मंदिरों में अर्पण करके आते लोग फ्लावर्स, वहां से उसने टाई अप किया, उन फ्लावर्स को लेते थे, वहां से प्रोक्योर करते थे। दूसरा, जो फ्लोरिकल्चर वाले फार्मर्स हैं, अब देखो, एक तो बड़ा अच्छी क्वालिटी का जो फ्लावर होता है जो कि आपका एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 पे जो अच्छी क्वालिटी का होता है हमारे फ्लावर, जो कि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे ऑफिस में या बुके बनाने में यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर का जो पंखुड़ियां बच जाती है ना, जो बिल्कुल टूट गया, जो गिर गया, उस वाले फ्लावर्स का जनरली कुछ ना कुछ एसेंशियल ऑयल लोग निकालते भी है, तो वो वहां से उनको प्रोक्योर करती थी, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे और बहुत सारे फिर यूज जो बुके होते हैं, बुके हो गया तो उसका क्या यूज है, वो सूख गया, हो गया, तो उससे उससे भी कुछ एसेंशियल ऑयल्स या उनसे कुछ आप बोल सकते हो कि जो वो होता है ना पिगमेंट पिगमेंट निकालती थी, राइट। एंड देन शी यूज्ड दीज ऑल ऑफ दीज, उनमें बाइंडिंग एजेंट के लिए उसने गोट मिल्क यूज किया, हनी यूज किया, एंड दैट्स हाउ, एंड शी एक इतना अच्छा बिजनेस मॉडल बना उसने वहां के अपने लोकल एरिया के स्मॉल जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की विमेन होती है ना, बिल्कुल छोटे छोटे, तो एसएचजीज की विमेन को उसने जोड़ा, उनको ट्रेन किया कि हाउ वी कैन मेक हैंडमेड सोप्स यूजिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है। उनको बाइंडिंग करना सिखाया, सब सिखाया, करते 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 वो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप हो गया। एंड इसमें एक और एग्जांपल अगर हम लेना चाहे, जैसे लिज्जत लिज्जत पापड़ का एग्जांपल था, इट स्टार्टेड लाइक वेरी बहुत छोटे से बिल्कुल गांव में शुरू हुआ, करते करते आज वो नंबर 1 पापड़ का ब्रांड बन गया। तो आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हेन आई टॉक अबाउट दिस कॉस्मेटिक वाला, लाइक लेट्स कम बैक टू दैट। तो उस लेडी ने जो बनाया, आई शो हर वन स्लाइड एज वेल। तो उसने जो बनाया, उसके बाद वो प्रोडक्ट्स बने, एंड नाउ दीज आर लाइक, उसमें उसने 2 कैटेगरीज रखी, एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स जो कि एवरीबडी कैन बाय, एंड देन देयर वाज सम ऐसा बोलते हैं ना इलीट प्रोडक्ट, जिसको एक नॉर्मल साबुन भी 500-600 की, और वो बहुत धड़ल्ले से बिकी उसकी, राइट। सो दैट्स हाउ, बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज गुड फॉर देयर स्किन एज वेल, और उसमें सारा का सारा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, केमिकल्स इज जस्ट यूज्ड फॉर बाइंडिंग ओनली, ठीक है, जस्ट फॉर प्रिजर्वेशन। तो दैट इज हाउ दैट प्रोडक्ट, दोज प्रोडक्ट्स, उसका प्रोडक्ट लाइन में आई थिंक आज के डेट में आई थिंक मोर देन 76 प्रोडक्ट्स आर देयर। तो इट हैज स्क्रब्स है, पता नहीं क्या क्या बना दिया, अब तो शैम्पू भी बना दिया, फेस पैक और लिप बाम, और सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो सोप्स के अलावा बहुत सारे, लाइक आई सेड कि 76 प्रोडक्ट्स आर देयर, ठीक है। सो दैट्स हाउ कॉस्मेटिक्स में भी एग्रीकल्चर का बहुत बहुत ही बड़ा हाथ हो सकता है। व्हेन आई टॉक अबाउट क्लोथिंग, क्लोथिंग में आजकल अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल तो सबको पता है कि हाँ भैया ये कपड़ा उससे बना है, ये उससे बना, उससे बना है। आजकल पीपल टॉक अबाउट ऑर्गेनिक कॉटन का मेरे को शर्ट चाहिए, विच इट्स एन इलीट मार्केट, इट्स अ वेरी निश मार्केट। तो वो शर्ट्स नॉर्मली जो अगर आप 500-600 की खरीद लेते हो, वो 5000 की मिनिमम शर्ट आती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कॉटन एक तो पहले इतना इतना रेयर चीज है, एक रेयर रिसोर्स है, उससे आप शर्ट अगर बना रहे हो, राइट। सो दीज आर हाउ लाइक दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ हाउ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो ग्रोइंग। When I talk about fuel, so biofuel is there, right? When I talk about food, food processing is there, food and nutrition is there. When I talk about health, health में pharmaceuticals में अगर हम देखते हैं nutraceuticals, right? That is also one of the way how agriculture can be a part of pharma, right? And then total बात करते हैं economy की. So yes, I'll just take you through क्योंकि I think इसमें ज़्यादा detail की ज़रूरत नहीं है. So this is our incubator that I work with. So we help the startups grow and we have been doing it for more than 10 years now. और हमारा I think 4 साल से हमारे पास we have the RKVY रफ्तार का funding, where we have 29 incubators pan India that work with the startups. We are not just incubating the agri startups, we are also incubating the business incubation centers. We are also training the incubators, like how can they deal and help the startups grow, right? सो ये सारे के सारे जो जितनी भी चीजें हमने पीछे अभी डिस्कस की थी ना कि ये क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती है,
इन सब में कोई भी एक बिजनेस इंक्यूबेटर, मतलब आई एम कमिंग फ्रॉम पूसा कृषि, तो आई टॉक अबाउट पूसा कृषि, बट आई टेल यू कि किसी भी 29 इंक्यूबेशन सेंटर के पास अगर आप जाएंगे जो कि एग्री के रिलेटेड हैं, सारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की, RKVY रफ्तार, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार स्कीम में आते हैं, तो वो सारे के सारे आपको इन हर एक इंडिविजुअल स्टेप पे हेल्प कर सकते हैं. इफ समबडी कैन म्यूट. ओके, वेट, हाँ, डन. Okay, so if I talk about the numbers, so these are the numbers, and you will be surprised to know globally we stand at rank 2nd. If you can clearly see, US is at rank 1st, India is at rank 2nd, UK is at rank 3rd, and then comes Israel and China. Israel is also one of the, I would say fastest growing startup ecosystem all over the world. क्योंकि पिछले 10 सालों में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था, टॉप 5 छोड़ो, टॉप 10 में भी नहीं था, पर पिछले 10 सालों में यहाँ पे पूरा एंटायरली एकदम बोलते हैं ना, एकदम उल्टा ही हो गया सिचुएशन. सो दैट हैज बिकम लाइक वेरी गुड एग्जांपल एज वेल. तो अब हम बात करते हैं, और वो धीरे धीरे 2009 से शुरू हुआ था वहां पे, 2000 आई थिंक 2007 से शुरू हुआ था, 2009 में उनका काफी शुरू, देयर वर सम पॉलिसी इंटरवेंशंस जस्ट लाइक वी हैड एट 1991. सो यस, सो स्ट्रॉन्ग GDP ग्रोथ है. द फैक्टर्स आर दैट हमारे डोमेस्टिक डिमांड, इफ यू टॉक अबाउट डोमेस्टिक डिमांड, so India still stands at number 1 in PPP, that is purchasing power parity. So that is also, that speaks of our culture as like the whole Indian community as well. Because if we talk about the European market, so people are not very how do I say, adaptable to change. जैसे कि अगर कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है तो पीपल आर नॉट वेरी, they become very skeptical कि उसको प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे नहीं या नहीं करेंगे. एंड इट्स लाइक, डिस्पाइट इंडियंस, व्हाट डू वी डू, कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, कोई भी नया चिप्स का फ्लेवर आता है, कोई भी नई चीज आती है, कोई भी नई शर्ट आती है, कोई भी नया कुछ आता है, तो वी आर लाइक, वी वांट टू ट्राई. सो दैट्स हाउ आवर परचेसिंग पावर पैरिटी इज लाइक क्वाइट गुड. दैट्स व्हाई जितने भी स्टार्टअप के नए नए प्रोडक्ट्स बन के आते हैं, they, after that, like testing and validation, like after everything, like when the product is launched, people want to try those products, because that's how these startups are also growing. Because otherwise हम एक अपना उसी पे पकड़ के बैठे रहेंगे कि हाँ भाई, हम यही ब्रांड्स यूज करेंगे, इसी कोई खाएंगे, इसी कोई पहनेंगे, इसी कोई करेंगे, तो उससे क्या होता है कि परचेसिंग पावर पैरिटी काफी लो हो जाती है, just because of the growing rate of purchasing power parity, which is like we have been on number 1 since I think more than 2 decades now. तो इसकी वजह से क्या होता है कि द कंपनीज वेयर, लेट्स से फॉर एग्जांपल आईफोन, पहले आज से कुछ 12-15 साल पहले आईफोन लॉन्च होता था यूएस में, उसके 1 महीने बाद इंडिया में लॉन्च होता था. अब थिंग्स आर एंटायरली डिफरेंट. अब पहले इंडिया में लॉन्च होता है, मे बी कुछ 2-3 साल पहले तो सेम डे लॉन्च होता था. अब ऐसे होता है कि यहाँ पे पहले लॉन्च होता है, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद उधर लॉन्च होता है, बिकॉज दे नो दिस इज अ बिगर मार्केट, बिकॉज दे नो दीज पीपल आर बाइंग दीज थिंग्स, बिकॉज दे नो whatever they introduce, whatever the new technology they won't be inducing in the Indian market, people will take it. वो हाथ से मतलब हाथों हाथ उस चीज को खरीदते हैं, because of our purchasing power parity, because of our domestic demand, because of our, I mean, इसके लिए एक फैक्टर ये भी है कि growing population भी है. We are at rank 1 in population as well now. अब चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं हम लोग. So not just growing rate of population but also population wise. ठीक है. So yeah, so these are like favorable demographics, जिसकी वजह से, और बिकॉज वी आर ऑल्सो वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारी जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है जिसका मेजर सेक्टर यंग है, जिसका मेजर आई वुड से कि शेयर ऑफ पॉपुलेशन एज वाइज इज यंग. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स. सो येस, एंड अदरवाइज इसके अलावा जो लास्ट चीजें हैं, दैट इज लाइक आवर कॉर्पोरेट इज वेरी startup friendly, our government is also startup friendly, so we are very independent. हमें academia में भी पढ़ाया जाता है startups के बारे में. So yes, the government is also very supportive. So these are the things that have contributed for us to be on the rank 2. अब बात करते हैं कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या होना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए. ये सारी, आई डोंट थिंक सो कि इसमें मेरे को डिटेल में जाने की जरूरत है. सो इट स्पीक्स अबाउट कि आप रिस्क टेकिंग कितना है, आपको अचीव कितना करना है, आप कितना ओरिएंटेड है अपने काम को लेके, हाउ मच एनर्जी डू यू हैव, what is the level of creativity or innovation that you want to work with, कितना कॉन्फिडेंस है. सो ऑल दीज थिंग्स, राइट. सो आई विल जस्ट टेक यू थ्रू दिस कि every entrepreneur at some point wishes to achieve something that has never done before. तभी हम बोलते हैं कि स्टार्टअप इज समथिंग that brings something new in the market. अब न्यू का मतलब है कि इनोवेशन उसको लगाना पड़ेगा. इनोवेशन necessarily doesn't mean, I mean, it is also a growing definition now. It necessarily doesn't mean कि
द प्रोडक्ट हैज टू बी वेरी रुडिमेंटली न्यू, कि कभी कुछ बना ही नहीं ऐसा. Innovation cannot just include product innovation. Now it can be a process innovation. Now it can be a supply chain innovation. Now it can be a market linkage innovation. So आपको देखना है कि आपने नया इंट्रोड्यूस क्या किया. What is the USP that you have? आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है? That what makes you stand out? What makes you better than others? That is also a part of your innovation policy as well. ठीक है, तो आगे चलते हैं. So when we talk about Raftar program, okay, I think it's not needed. Let's talk about Israel. Israel का मैंने आपको बोला था कि 2009 के आसपास उनका ग्रो करना शुरू हुआ था, and they at that time उनका वेंचर कैपिटल फंड बहुत बड़ा था, पूरा फ्रांस और जर्मनी को कंबाइन करने के से भी ज्यादा था. Now, if we talk about now, so they have more Nasdaq listed corporations that whole of the Europe or Asia. 1844 लोगों में से हर 1844 1844 में से एक आदमी के पास वहां पे स्टार्टअप है आज. ठीक है, एंड देन दे हैव 30 times द वेंचर कैपिटल ऑफ यूरोप, एंड नाउ उनके पास 100 मेल एंटरप्रेन्योर्स में से 64 विमेन है, विच इज ऑल्सो वेरी कमेंडेबल थिंग टू नो, राइट. सो प्लेयर्स क्या क्या होते हैं इकोसिस्टम में, व्हाट आर द अदर प्लेयर्स. हमने इंटरनल की बात कर ली, हमने गवर्नमेंट और बाकी पॉलिसीज की बात कर ली. सो देन देयर कम्स दीज थिंग्स एज वेल, कि इसको पूरा कंबाइन में अगर हम बात करें तो फैमिली है, फ्रेंड्स है, पीयर्स है, कम्युनिटी है, फंडिंग एजेंसीज है. आई थिंक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस. सो ये सारा का सारा सिनेरियो चेंज कैसे कैसे हुआ. सो पैराडाइम शिफ्ट आया था 1991 में, व्हेन वी ओपनड आवर ट्रेड बैरियर्स. तो हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, डीरेगुलेशन हुआ कुछ गवर्नमेंट रूल्स का, प्राइवेटाइजेशन आया, टैक्स रिफॉर्म्स आया, एंड करते करते एक टाइम पे अगर आपको याद होगा बैंगलोर को हम बोलने लगे थे कि हमारा आईटी का स्टार्टअप हब. अब वो सिर्फ आईटी का हब था, एग्री का हब नहीं था. एग्री का हब धीरे धीरे आया, एंड नाउ आई थिंक फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 years जब से ये रफ्तार वाला स्कीम और बाकी नाबार्ड के इंक्यूबेशन सेंटर्स आए हैं, एंड देन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के भी एग्रोटेक पे इंक्यूबेशन सेंटर्स आ गए हैं. इनफैक्ट बिट्स का भी आ गया है एग्रीटेक पे, और बहुत सारे अदर प्लेयर्स आर ऑल्सो गेटिंग इन टू द मार्केट, जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का फंडिंग के थ्रू सोशल अल्फा आया, विल ग्रो आया आईआईटी चेन्नई के थ्रू. सो ये सारे के सारे एग्री को एक बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा बिजनेस इंक्यूबेशन मार्केट इन्होंने बनाया कलेक्टिवली. So these all are the players that have contributed massively in building the startup ecosystem for agri and allied sectors that we see today. आज हम बात करते हैं, अभी इसके पहले जो सेशन था, आई वाज जस्ट लुकिंग एट, लाइक मैं लास्ट में ज्वाइन की थी, तो यस दीज गाइज दे आज के अगर हम बात करें 12-15 साल पहले, दे नेवर वुड हैव डन दिस बिग, बट नाउ द प्लेयर्स आर बिगर, द फंड इज वेरी लिबरल, and the things are very progressive. So now these startups are becoming bigger and bigger, and that's how they're growing, and that's how our country is, like as a whole is also growing. That's how economy is also boosting. So yeah, so when we talk about innovation, like I said, कि product और service innovation हो सकता है, process innovation हो सकता है, business model का innovation हो सकता है, position का भी innovation हो सकता है, कि ये product इस market में कैसे launch होगा, ये यहाँ पे कैसे आएगा. तो ये सारी तरह की innovation हो सकती है. अब ये सारा का सारा इनोवेशन के बारे में जानने के लिए हमें रिसर्च करना जरूरी है, कि मैं स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ, तो मैं किस फील्ड को लेकर स्टार्टअप करूँ. नेवर फॉलो द ट्रेंड्स, आई वुड से ऑलवेज फॉलो द पेन पॉइंट्स, कि क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफाई किया और मैं इसके बदले में सोल्यूशन क्या देने वाला हूँ, राइट. सो दैट ऑल्सो वर्क्स लाइक दैट. तो जब हम बात करते हैं रिसर्च एंड पॉपुलर पब्लिकेशंस की, ठीक है, आप वो देख सकते हैं, आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं कि हाँ यार ऐसा भी है, जैसे उबर ओला ने किया होगा, जैसे इन लोग जोमेटो वगैरह ने किया होगा, या बाकी के और स्टार्टअप्स ने किया होगा, ठीक है. तो ऐसा ऑब्जर्व करके भी कर सकते हैं. जैसे कि हमने देखा ना अभी वो अर्बन क्लैब जो अब अर्बन कंपनी नाम से हो गया, तो उसने भी सोचा होगा यार घर बैठे बैठे अगर मेरे को ये कुछ कराना है, मुझे घर में पंखे साफ कराने हैं, मुझे किचन साफ करानी है, मुझे घर में अपना सैलून सर्विसेज चाहिए, तो ये भी अब पॉसिबल है. मतलब हर चीज एज अ सर्विस पॉसिबल है अब, ठीक है. एंड हाउ एंड व्हाई, क्योंकि वो किसी ने कभी सोचा था, एंड देन दैट्स आइडिया गॉट इनटू अ बिजनेस फॉर्म, दैट्स हाउ स्टार्टअप बना, उसने फिर इस आइडिया को मार्केट में लाया, और करते करते अब बाकी लोग उसको कॉपी करते हैं, कॉपी भी नहीं बोलेंगे आई वुड से, बाकी लोग भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके साथ, उसके धीरे धीरे वो कॉम्पिटिटर्स भी बने, एंड दैट्स हाउ यू आल्सो हैव कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, कि वो ज्यादा का ज्यादा मतलब मोनोपोली भी नहीं कर पाएगा, बाकी के प्लेयर्स भी मार्केट में. सो दैट्स हाउ दीज थिंग्स आर आल्सो हैपनिंग. अदरवाइज इसके अलावा स्पीचेस, सेमिनार एंड प्रेजेंटेशन, सो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बनता है, ठीक है. सो इसके अलावा सोर्सेज भी जो है, ये पब्लिकेशंस होगी, ये सब हो गया, आई कैन स्किप दैट पार्ट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ओरिएंटेशन, क्या सा हो सकता है एक स्टार्टअप के लिए, तो 3 तरह का हो सकता है. रिस्क टेकिंग क्या है, आपको ये देखना है, और ये तीनों साथ में चलती हैं. आपके अंदर इनोवेटिवनेस कितनी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, इनोवेटिव कितने हो आप, और प्रोएक्टिव कितने हो. सो दिस इज लाइक अ होल
orientation का diagram, if I can show you that. So these three things are like interconnected, interrelated, and that's इसमें जिस I mean it depends upon what kind of factor, क्योंकि इनका तीनों का variation, इन तीनों का percentage in any person will be different from other. So उसके हिसाब से उसका startup grow या build या sustain करता है. I mean other factors remaining constant. Otherwise market का भी बहुत बड़ा factor होता है, right? So when I talk about kinds of innovation, so innovation छोटी से छोटी भी हो सकती है, which is like incremental innovation. जैसे कि किसी ने frozen yogurt जब introduce की होगी, फिर धीरे धीरे जैसे bubble wrap introduce किया होगा, और radical innovation भी हो सकती है. अगर हम जाएंगे लास्ट में तो you can see कि इतने छोटे से लेके भी innovation हो सकती है और इतनी बड़ी भी हो सकती है. Radical innovation में जैसे आप देख सकते हैं तो laparoscopic keyhole surgery, when it was introduced, ऐसा कुछ भी नहीं था दुनिया में, ठीक है, ऐसा कुछ था ही नहीं दुनिया में. So that is like a radical innovation कि बिल्कुल ही entirely new प्रोडक्ट या न्यू टेक्नोलॉजी ऐसी ला देना जो विच नेवर एग्जिस्टेड, ठीक है. सो दीज आर लाइक इट्स द होल कॉन्टिन्यूम ऑफ दिस रेडिकल एंड इंक्रीमेंटल इनोवेशंस. आई वाज जस्ट शोइंग यू दीज एग्जांपल्स कि इनोवेशन कैसे कैसे काम करती है, ठीक है. इनोवेशन स्पेस की व्हेन वी टॉक अबाउट इनोवेशन स्पेस, देयर आर लाइक 4 P's टू इट. सो फर्स्ट इज योर प्रोडक्ट, सेकंड इज योर पोजीशन, कौन सी मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, कहाँ पे लाने वाले हो, पोजीशन, उस ब्रांड की इमेज क्या बनेगी, प्रोसेस क्या होगा, एंड फुल पैराडाइम क्या होगा, ठीक है. सो इसमें जब हम बात करते हैं, इसमें हमें 4 चीजें देखनी होती है कि इंक्रीमेंटल कैसा होगा, कि कितना इसको बढ़ा सकते हैं इंक्रीमेंट वाइज, सस्टेन कितना कराना है, रेडिकल कितना होगा, डिसरप्टिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द हाउ एंड व्हाई, आई डू नॉट थिंक सो कि इसमें जाने की जरूरत है. आई विल जस्ट शो यू दीज नंबर्स मे बी, या कि 7000 थे 2008 में, और 2022 का डेटा है, इसके बाद तो बहुत बढ़ गया है. 2022 का डेटा जो है इट सेज 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हो गए, ठीक है. That's how India became like the second largest startup ecosystem in the world. और स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ स्टार्टअप्स की वजह से ही बना. और हमारे पास अगर मैं बात करती हूँ 1,12,718 DPIIT रजिस्टर्ड, ये डेटा है 3 अक्टूबर 2023 का, विच कम्स फ्रॉम 760 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, राइट. और 2014 से 2022 के बीच में यही स्टार्टअप्स ने $135 बिलियन, $135 बिलियन US दे हैड रेज्ड, राइट. और इसी को 3 अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही इंडिया इज होम टू 111 यूनिकॉर्न्स, जिनका टोटल वैल्यूएशन ये 349.67 बिलियन है, ठीक है. एंड द नंबर्स आर आल्सो राइजिंग अगेन. तो ये अगर हम बात करते हैं टोटल तो 56 डाइवर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, 13% आर IT, 9% इज हेल्थ केयर, फिर हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, 7% इज एजुकेशन वाले स्टार्टअप, और 5% फूड एंड बेवरेजेस एंड एग्रीकल्चर. तो टोटल मिला के 10% इन एग्री स्पेस तो डायरेक्ट है, राइट. एंड देन आई ऑलरेडी मेंशन कि IT का भी अब तो एप्लीकेशन आ गया है, हेल्थ केयर का भी एप्लीकेशन आ गया है, एजुकेशन की व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन तो एग्री एक्सटेंशन में स्टार्टअप्स आ गए हैं. सो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन. सो यस, वी हैव अ फ्यू पार्ट्स इन एवरी सेक्टर, बट टोटली इफ वी टॉक अबाउट कि 10% तो है ही एग्री स्पेस में फ्रॉम ऑल दीज. तो आई एम शोइंग यू ये लास्ट ईयर के कुछ यूनिकॉर्न्स हैं. 2023 में जेप्टो बना यूनिकॉर्न, 2022 में ये सब बने, बोट था. इफ यू कैन सी, मे बी यू मस्ट बी नोइंग सम ऑफ द स्टार्टअप्स. 2021 में ये सब यूनिकॉर्न्स थे. सो अभी तक हमने एज लाइक पर से एग्री का यूनिकॉर्न नहीं देखा है, विच इज लाइक वेरी सून वी विल बी नोइंग अबाउट लाइक 2024 में आई थिंक एग्री का कोई ना कोई यूनिकॉर्न बन के आएगा, क्योंकि नंबर्स आर लाइक बोलते हैं ना एकदम स्काई राइज हो चुका है अब तो, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एन एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर, so agribusiness incubator is a place that provides every support to nurture these startups to make these ideas into a viable business entity, right. So 456 incubators registered हैं as per Startup India website, जो कि सारे के सारे बिजनेस इंक्यूबेशन एग्रीकल्चर अलाइड एरियाज में करते हैं. लाइक आई ऑलरेडी सेड कि जिसमें नाबार्ड का भी बहुत बड़ा हाथ है, रफ्तार का भी है, देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भी है, अदर यूनिवर्सिटीज का भी है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस का भी है, राइट. फिर ICR IRI ने ये ZTM BPT यूनिट्स बनाए थे. ऐसे करते करते मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू द होल स्टोरी, हाउ डिड इट स्टार्ट. 2014 से ये सारा का सारा सीड शुरू हुआ, और करते 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 नाउ वी हैव लास्ट लाइन, आई जस्ट रीड दैट फॉर यू, कि नाउ रनिंग पैन इंडिया विद 29 एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स व्हिच आर सपोर्टेड डायरेक्टली थ्रू RKBY रफ्तार, जिसमें हम फंडिंग भी देते हैं. तो वेंचरिंग फॉरवर्ड की व्हेन आई टॉक अबाउट, these are the services that these business incubators provide. business support होता है, technical support होता है, infrastructure support होता है, apart from funding, apart from tech validation, apart from everything else, right. So why incubation? अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड लेवल पे तो ये बहुत पुराना कंसेप्ट है. It started in 1959 in US, right, and now 2024 में भी चल रहा है, and the people and the startups are being supported through these incubation centers.
बिजनेस इंक्यूबेटर्स की जब मैं बात करती हूँ कितने तरह के होते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स? फर्स्ट, देन बिजनेस एक्सेलरेटर्स, देन हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स आर लाइक मिक्स ऑफ बोथ। तो इंक्यूबेटर की बात करते हैं तो वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए, उनको सपोर्ट करते हैं। 1 to 5 years का जेस्टेशन यानी इंक्यूबेशन पीरियड होता है। लेसर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स आर फोकस्ड अपॉन एज पर टेक्निकल स्ट्रेंथ, और मेजर थ्रस्ट होता है टेक्निकली उनको स्ट्रॉन्ग करना, उनको लैब या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देना। एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं? उनके फिक्स टर्म कोहोर्ट बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। ये लेटर स्टेज स्टार्टअप ग्रोथ पे काम करते हैं। तो व्हेन यू आर सपोर्टेड थ्रू अ बिजनेस इंक्यूबेटर, यू गो टू एन एक्सेलरेटर कि मेरे को स्केल अप करना है। तो इसमें इंटेंसिव मेंटरशिप होती है, नेटवर्किंग तो उधर भी होती है इंक्यूबेटर्स में भी, यहाँ असेस टू इन्वेस्टमेंट्स भी है 6 months to 9 months में। इट गिव्स यू लाइक द बेनिफिट दैट यू आर रिक्वायरिंग फॉर। एंड सम आर द हाइब्रिड्स, सो वी वर्क ऑन अ हाइब्रिड मॉडल, सो वी हैव बोथ इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स विद अस, राइट। इमर्जिंग ट्रेंड्स की मैं बात करूं तो आजकल जो मैं आपको बोल रही थी, सी दीज आर द न्यू मार्केट प्लेसेस, न्यू फोकस एरिया। अब हम सिर्फ फार्म मैकेनाइजेशन की बात नहीं करते हैं, अब हम सिर्फ फूड प्रोसेसिंग या बायो फर्टिलाइजर्स या इस सब की बात नहीं करते हैं कि एग्री एक्सटेंशन। नाउ वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, नाउ वी टॉक अबाउट एग्री इनपुट मार्केट प्लेसेस, AIM। टेक इंटरवेंशन इसमें क्या है? मोबाइल एप्स आर देयर, एनालिटिक्स इज देयर, ई कॉमर्स इज देयर, हाइपर लोकल अप्रोच इज देयर। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है इस एग्री इनपुट मार्केट प्लेस का? क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई एट योर डोर स्टेप, या फिर एग्रो एडवाइजरी, राइट। तो ये क्या करते हैं? प्रोवाइडिंग फार्मर्स बेटर असेस टू एग्रीकल्चर इनपुट्स एट देयर डोर स्टेप्स, और उनको एडवाइजरी सर्विसेज देना। इसमें कुछ स्टार्टअप जो हैं, जो स्टार्स हैं इस सेक्टर के, देहात इज देयर, एग्रो स्टार इज देयर, बिग हार्ट इज देयर, सो यू कैन सी दीज एग्जांपल्स। दूसरा इसमें अगर मैं बात करती हूँ, जब मैं बात करती हूँ इसका फार्म मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स, यहाँ पे अभी भी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ही है, पर यहाँ पे टेक इंटरवेंशन क्या है? ड्रोन्स एंड डेटा एनालिटिक्स, IoT सेंसर्स एंड मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इनका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? ट्रेसेबिलिटी की बात करेंगे, देन टॉक अबाउट क्रॉप मॉनिटरिंग, क्रॉप मॉइस्चर की बात करेंगे कि मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्रॉप में कितना है, सडन कितना है, ये कितना है, वो सब की सब सारे पैरामीटर्स, राइट। सो इसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज अ मेजर सेक्टर हियर, and these businesses offer innovative technology solutions for increase करने के लिए crop productivity and farmer process efficiency। इसमें major stars हैं, Cropin is there, Agnext is there, so these are the few examples। तीसरा जो मैंने आपको बोला था, फार्मिंग एज अ सर्विस, राइट, मैकेनाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो टेक इंटरवेंशन इसमें क्या हुआ? हार्डवेयर इज देयर, इसमें फार्मिंग एज अ सर्विस तो है ही, वर्टिकल फार्मिंग आ गया, हाइड्रोपोनिक्स आ गया, द गाय हु वर जस्ट टॉकिंग टू यू। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? पेपर यूज हो सकता है, फार्म मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, दीज आर द टेक्नोलॉजी दैट दे आर प्रोवाइडेड, राइट, एट लोअर स्ट्रेट। तो इसमें लेटेस्ट फार्म मशीनरी या इक्विपमेंट्स भी दिया जा सकता है, प्रोफेशनल सर्विसेज दोनों दी जा सकते हैं। मतलब आपको फार्मिंग चाहिए, आपको हम फार्मिंग ला के देंगे। तो सिकल इनोवेशन है, EM3 है, फ्यूचर फार्म्स है, फार्म भी है, बहुत सारे हैं, राइट। फिर आता है लाइव स्टॉक में नया इंटरवेंशन क्या है? लाइव स्टॉक में नया इंटरवेंशन इज दैट नॉट जस्ट कैटल, पोल्ट्री एंड फिशरीज, अब डेटा ड्रिवन सप्लाई चेन पे काम होता है, फाइनेंसिंग, एग्री फिनटेक पे काम होता है। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? इसमें लाइव कैटल ट्रैकिंग आप कर सकते हो, फीड मैनेजमेंट आप थ्रू एप्स और दीज थिंग्स कर सकते हो, डेयरी डिजिटाइजेशन कर सकते हो। तो इसे अगर आपने देखा हो, ये पशु चिकित्सा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो दो विमेन दे स्टार्टेड, राइट। एंड देन कृषि कृमांशी इज देयर, स्टेलअप एप्स इज देयर, मूव फार्म इज देयर, बहुत सारे हैं ऐसे। फ्यूचर ट्रेंड्स की जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर ट्रेंड्स विल बी डिमांड ड्रिवन। अब ऐसा नहीं होगा कि हाँ कि हम जो भी बना रहे हैं वो बिकेगा, जिसका डिमांड होगा। दैट्स व्हाई आई सेड नेवर फॉलो द ट्रेंड व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, ऑलवेज लुक फॉर द पेन पॉइंट, क्योंकि उसका ही डिमांड होगा। अगर आपने किसी पेन पॉइंट को एड्रेस कर दिया है, आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ दिया है, तो पीपल विल टेक अप योर स्टार्टअप आइडिया और योर प्रोडक्ट और योर सर्विस वट एवर यूर डेवलपिंग, लाइक बिल्कुल एकदम वर्ड ऑफ माउथ, एकदम बोलते साथ बिकेगा वो, उसको लोग प्रमोट भी करेंगे, आपको मार्केटिंग में ज्यादा पैसा डालना भी नहीं पड़ेगा इफ इट इज अ डिमांड ड्रिवन प्रोडक्ट और अ सर्विस। टेक्नोलॉजी विल बी द की इन द फ्यूचर, क्योंकि एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग सबकी हम बात करते हैं, अब सिर्फ हम नॉर्मल उस पर बिस्किट्स बनाने पे नहीं रह गए, हम फूड फोर्टिफिकेशन में भी देखते हैं कि कितने तरह का कैसा, क्योंकि पीपल आर अवेयर नाउ। अब लोगों को पता चल चुका है कि आप शुगर नहीं लिखेंगे कि टोटल एडिड शुगर्स में 0 कर देंगे तो भी शुगर कहाँ कहाँ से ढूंढी जा सकती है। नाउ दे नो अबाउट द इंग्रेडिएंट का उसका नाम आपने रिप्लेस करके कैसे डाला है, राइट। सो टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। वर्टिकल इंटीग्रेशन, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन में दोनों चीजें, प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको देखने पड़ेंगे अपने सप्लाई चेन को। अगर इफ एनीबडी वांट्स टू नो मोर अबाउट कैसे डिसरप्टिंग एग्रीकल्चर सप्लाई चेन्स हो रही है, आई वुड आल्सो सजेस्ट, आई मीन आई शेयर द लिंक विद उत्कर्षा। वी हैव एन एग्री इंडिया मीट प्लान फॉर 10th of May जो हम दिन में करने वाले हैं, विच आई थिंक दीज पीपल कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। आई शेयर द लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आज 12 बजे हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे क्योंकि परसों ही है वो,
तो यहाँ पे आप जान सकेंगे उस इवेंट में हमारे पास नाबार्ड के एक्स सीजीएम रहेंगे और हमारे डॉक्टर पार्था दास गुप्ता रहेंगे, विच इज अ वेरी वेल नोन एक्सपर्ट इन digital agriculture supply chain and agri logistics. So he'll talk about that in detail, right? So vertical integration नया चीज आएगा, इसमें बढ़ेगा ये और भी. So environmental awareness बढ़ रही है चीजों में, लोगों में बढ़ रही है. तो now ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं फ्लरिश कर पाएंगे which are which are not environment friendly. So ऐसे ही greener technologies will be more promoted now. और consumer focus, so you have to think like the consumer is the king. तो उसको marketing, brand building इन सब पे काम करना पड़ेगा. इवॉल्विंग एरियाज क्या है? मार्केट लिंकेज है, डिजिटल एग्रीकल्चर है, बेटर एक्सेस टू इनपुट्स, फार्मिंग एज अ सर्विस है, एंड एग्री फिनटेक है. तो किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए आइडिया फेज होता है, देन देयर इज टेस्टिंग फेज, देन स्टार्टअप फेज, एंड देन ऑनगोइंग बिजनेस फेज. दैट मींस कमर्शियलाइजेशन, राइट? सो ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन. आई वोंट गो इनटू दिस बिकॉज इसका स्कीम का हमारा कॉल खत्म हो चुका है ऑलरेडी. हम लोग फंड करने वाले हैं इस साल कुछ. आई जस्ट शो यू द नंबर्स. So this is one of the examples. Ankit Ahlawat था लड़का हिसार से. So he has developed, I'll not go into major details of this. I'll just tell you that he has developed world's first non-refrigeration required 6 months shelf life, ready to eat, room temperature पे, protein and both chicken and vegan bars. Protein, vegan, right? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट प्लूटस प्लस, जो मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल कोट कर रही थी ना काफी देर से, कि वो कॉस्मेटिक्स पे काम करती थी. तो हर नेम इज मृदुला भारद्वाज. शी स्टार्टेड फ्रॉम मोहाली, ठीक है. और ये जो फोटो नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ ये फोटो अमरेंद्र प्रताप जी हैं जो बिहार के स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं. उनसे इनको बेस्ट विमेन स्टार्टअप अवार्ड मिला था उस दौरान, जब इन्होंने बिहार में ये हर्बल प्राकृतिक साबुन आप देख रहे हैं ना, हाथ से बनाने वाली चीजें, राइट? तो ये दीज आर लाइक यू बॉडी स्क्रब्स हैं, कुछ बाम्स हैं, कुछ ऐसे, कुछ चारकोल का आई थिंक फेस पैक है, ऐसी बहुत सारी चीजें इन्होंने बना दी. थर्ड एग्जांपल इज नितिन ललित. इन्होंने ये ओपनेबल प्लांटर्स बनाए जिसमें आप अपने प्लांट की लाइव रूट भी चेक कर सकते हैं. अगर आप कलर देख पा रहे हैं, बिस्लेरी के ढक्कन का रिसाइकल्ड वर्जन है ये. तो देयर इज लाइक दिस प्लांट बेड, एक सेपरेटर बीच में लगाया है, और ये इट्स लाइक अ सेल्फ वाटरिंग प्लांट. आप पानी देंगे क्योंकि इवेपोरेशन है, प्लास्टिक है, अनलाइक दीज अर्दन पोट्स, मिट्टी वाले गमले जिनसे पानी निकल जाता है. इसमें आपको गर्मी में भी 3-4 दिन में एक बार पानी देंगे तो चलता है. इट क्रिएट्स अ नियर हाइड्रोट्रोपिज्म इफेक्ट विच रूटिंग एंड शूटिंग नॉर्मल गमले से 60% ज्यादा है, विच वी हैव टेस्टेड एंड वैलिडेटेड. तो इसको भी फंडिंग मिला है. तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. So I'll take you to the impact that has been created through these incubation centers all over India, which are like the hundreds of numbers. तो ये नंबर सिर्फ हमारे इंक्यूबेशन सेंटर जो 29 है उनका मैं आपको नंबर दिखा रही हूँ. 2019 से सिर्फ मार्च 2023, एक साल पुराना डेटा है ये, एक साल से भी ज्यादा, 595 करोड़ टोटल टर्नओवर था हमारे स्टार्टअप्स का, ठीक है. और ये रफ्तार फंडिंग 65.43 रेज कर चुके थे. यहां से शुरू करके इनका टर्नओवर इतना पहुंचा है. और इन्होंने फंड जो रेज किया अब तक, 79 स्टार्टअप्स ने 147 करोड़ फंड रेज किया है, जो इस फंडिंग से अलग है, जो कि विच हैज बीन थ्रू द इन्वेस्टर्स, राइट? सो दीज आर द नंबर्स दैट वी आर जस्ट शोइंग. और ये सिर्फ 10 इंक्यूबेटर्स का डेटा है, IRI और हमारे जो 9 राबी स्टार्टअप के इंक्यूबेटर्स हैं. अदरवाइज 29 का तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा अगर इफ आई हैव टू शो. सो दीज आर द नंबर. So when I talk about innovation again, so these are the motivating factors. Internal factors में educational background है, occupational experience है, desire to do work independently है, desire to branch out to manufacturing है, family background भी हो सकता है. External factors, आपको कितना assistance मिल रहा है गवर्नमेंट से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, टेक्नोलॉजी कैसी है, रॉ मटेरियल कितना मिल रहा है, और डिमांड क्या है आपके प्रोडक्ट का. 2 चैलेंजेस जो आपको फोकस करना पड़ेगा ई कॉमर्स पे, क्योंकि अब ऐसा जमाना नहीं है कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो बस एक दुकान मतलब एक ऑफलाइन स्टोर ही चलेगा. आपको अब ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द इंफॉर्मेशन एज. एवरीथिंग इज ऑनलाइन. इंटरनेट इज योर मेजर मार्केट. एंड देन यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट ग्लोबलाइजेशन, कि अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो धीरे 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 यू विल स्टार्ट फ्रॉम योर सिटी ऑफ कोर्स, देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम योर स्टेट, देन यू विल ग्रो इनटू अदर स्टेट्स. पर आपको ग्लोबल भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक नाउ वी टॉक अबाउट ग्लोकल, ग्लोबल इज लोकल, राइट? रिवॉर्ड क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के? इट गिव्स यू प्रॉफिट, इट गिव्स यू इंडिपेंडेंट, इट गिव्स यू पर्सनल फुलफिलमेंट. सो दैट मींस यू विल मेक योर ओन मनी, यू विल बी ऑन योर ओन बॉस, एंड यू विल एंजॉय अ सैटिस्फाइंग लाइफ, राइट? तो वैराइटीज क्या क्या हो सकती है? आप एक प्योर एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट इनोवेशन की बात करेंगे. आप एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, जो किसी और के बिजनेस को आप ओवरसी कर रहे हैं एडमिन के रूप में. आप एक फ्रेंचाइजी भी कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर की पूरा टीम मिला के भी कर सकते हैं. सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स.
इसमें आपको मेजरली जो चीजें ध्यान रखनी है वो यही है, कस्टमर फोकस होना चाहिए, इनोवेशन कितना है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन होना चाहिए, क्वालिटी परफॉर्मेंस होगा, इंटेग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा. So I'll not go into these details now. I'll just tell you the last thing. So business incubators are designed to hatch these new business ideas, and they are providing number of resources to a new venture. So I'll just rest here, like rest my tongue here by the last quote: keep moving, the mountains will move too. Thank you so much. So I'll just stop sharing. I'm not able to. Thank you, ma'am. On the behalf of my team, Just Agriculture, all our participants, I express a heartfelt gratitude for this amazing talk, ma'am, on this topic, agriculture entrepreneurship. And seriously, ma'am, it was very contagious, like how you're talking and how you are able to make the most complex concepts, which seems approachable when you are talking. And it was exciting also to listen to you. So I especially loved when you shared about these real world examples and the practical tips that you gave. So thank you for investing your time with us, ma'am. And it is my request to all the participants, if they have any questions, they can put in the chat box, or I'm just giving the access to unmute themselves, and they can ask to directly to ma'am as well. Ma'am, somebody is asking to share the registration link of that upcoming event that is going to be Wait. today. I'll just take it from my WhatsApp because that Agri-India meeting, it's a free of cost thing, so which will be very beneficial for them. वो दिन में है. I think आपका training तो शाम में चलता है ना? Yes, ma'am. It's only after 5 in the हाँ, तो evening. वो हम लोग कर रहे हैं दिन में 10 to 1. तो Okay. maximum 10 से 12:30 तक ही चलेगा. I'll just wait. I'll just get the link. Yeah. So yeah, meanwhile, anybody wants to ask anything, they can ask. Ma'am, we have a couple of questions in the chat box. So Right, after right. you share the link, we will get on the questions, ma'am. Cool. Yeah. Just a sec. Okay, so this is the link, and I'll also share कि कौन रहेंगे इसमें speakers. So this is the panel. Yeah, I think you can see, right? Is it visible? हाँ, अब मैं वापस आती हूँ questions के पे. Okay, somebody saying I'm working on smart banana farming and making a net profit of 400%. I would like to convert this into a startup. Smart banana farming. How can I get finance? Okay. Harshil, so where are you based? I would like to know. Ma'am, I'm from Gujarat. Okay, you're from Gujarat. Right. So I think Yes, ma'am. वहाँ पे हमारा गुजरात में आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्कीम तो आई थिंक बंद है, बट आई थिंक अभी IIM काशीपुर का फाइड करके है इंक्यूबेटर, उनके पास ना सर सीड फंड का 25 लाख तक का ग्रांट अवेलेबल है, एंड आई थिंक लास्ट डेट इज 15th of May. Shall I share the link here? Sure, ma'am. Wait. Yeah, ma'am. Sure, ma'am. हाँ, I'll do that. I think बाकी लोग के लिए भी फायदा रहेगा उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रांट है, अगर किसी को मिलता तो क्यों नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए. Yes, ma'am. Wait, I'll get the link. मैम मैं नेक्स्ट सेमेस्टर एट आनंद नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं, मतलब क्या है? हाँ, नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हैं. नेक्स्ट ईयर तो फिर आप सभी इंक्यूबेटर का ग्रांट खुलेगा, आप कहीं पे भी कर सकते हैं. हाँ, PhD स्कॉलर्स कैन ऑल्सो ज्वाइन. यस, मैं अभी एक सेकेंड, मैंने हमारे आज स्टार्टअप्स के साथ शेयर भी किया था. बहुत सारे आप ना फॉलो कर लीजिए, मतलब इनको जैसे भी आप लिंक्डइन पे देख सकते हैं. लिंक्डइन पे ना बहुत सारी एप्लीकेशंस दिखती रहती हैं. तो अदरवाइज ना ये 29 के 29 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं. रफ्तार आप लिखेंगे तो सबकी कोई ना कोई किसी ना किसी की स्कीम ओपन रहती है. आई थिंक सिरकोट राबी की भी इस वक्त ओपन है, विच इज इन मुंबई. सिरकोट राबी. हाँ, मैं इधर लिंक में सिरकोट राबी का लिंक छोड़ रही हूँ.
क्योंकि आई एम जस्ट चेकिंग उनकी वेबसाइट, उस पर दिखा रहा था, राइट। 5 से 25 लाख का ग्रांट है इसका। 31 मई लास्ट डेट है सिरकोट राबी का। देर इज Okay, वन, sure. इनका पोस्टर मेरे पास मराठी वाला पड़ा है, आई शेयर दैट बिकॉज आई कैन वो समझ, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा उससे। पर हाँ, आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पे आपको दिख ही जाएगा। सी आई एम Okay, thank you, टेलिंग, ma'am. बहुत सारे ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए विलिंग है, बट आई थिंक प्रॉब्लम इज दैट आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज सपोर्ट फ्रॉम जस्ट एग्रीकल्चर इन स्कीम्स को प्रमोट कराने के लिए। Ma'am, we'll just convey your message to the concerned Yeah. person, and then ma'am, like we can do the thing. हाँ, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स है जो कि ओपन है, जो कि स्टार्टअप्स को बहुत हेल्प हो सकती है जिनसे। Yes, ma'am. आई एम चेकिंग, इसका है एक का कॉल और ओपन है, 30 मई का एक और ओपन है, विच इज केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सो somebody is from Kerala, they can explore that as well. Wait, I'm sharing this with you, क्योंकि हम लोग का वो इंक्यूबेटर ग्रुप है ना, तो वहां पे आ जाता है किसी ना किसी का। I'll share KAU, और KAU का लिंक भी होना चाहिए। आई थिंक दिस इज, ये लिंक्डइन का लिंक है, चलेगा पर everyone? सो दिस इज फ्रॉम केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और बाकी जो मेरे को नहीं दिख रहा है, आई एम गोइंग टू टाइप द नेम हियर। ये, अरे जितेंद्र जी, आप एक बार रुक जाइए, आपकी वजह से ना मैं, आपका ही रिप्लाई में चला जा रहा है, मैं सबको नहीं भेज पा रही हूँ। होल्ड ऑन ना, आई एम गेटिंग टू यू, डोंट वरी, आई एम नॉट रनिंग एनीवेयर, राइट। ओके, सो I'll also type a name. This is FIED FIED IIM काशीपुर। इनका भी आरके रफ्तार का ग्रांट ओपन है, विच इज लाइक, अगर आप प्री सीड पे, मतलब आप सिर्फ आइडिया से एमवीपी पे जा रहे हैं, वहां 5 लाख तक का ग्रांट है। मैं आपको ग्रांट क्लियर कर देती हूँ। ग्रांट का मतलब होता है आपको वो पैसा वापस नहीं देना है, वो आपको गवर्नमेंट दे रही है अपना आइडिया पे काम करने के लिए, राइट। एंड ऑल्सो दे हैव सीड का पैसा विच वी ऑल इंक्यूबेटर्स हैव, जिसमें 25 लाख रुपए है, ठीक है। वो भी ग्रांट का ही पैसा है, उसमें देर इज नो इंटरेस्ट, देर इज नो इक्विटी, देर इज नथिंग, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग बैक, यू जस्ट हैव टू फॉर्म अ फ्यू माइलस्टोन्स और उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना रहता है। एंड इट टेक्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक 6 to 8 months फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बी रिलीज, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 12 लाख आपको 6 महीने के अंदर मिल जाता है। पर वो 6 महीने में आपको ट्रेनिंग भी होगा, सब कुछ होगा। बट हाँ, आई टेल यू कि ऐसे एकदम से नहीं मिलता है, इट टेक्स अ टाइम, 6 महीने लगता है। बट येस, जो मैंने आपको अभी नंबर्स दिखाए थे, कुछ 252 करोड़, वो ऑलरेडी हमारे इंक्यूबेटर्स के थ्रू स्टार्टअप को पिछले 4 साल में मिल चुके हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। Okay, thank you so much, ma'am. Thank you, हाँ ma'am. जी, हाँ जी, आप बाकी भी एक्सप्लोर करते रहना। मैं यहाँ पे स्कीम का नाम लिख देती हूँ, RKVY रफ्तार इंक्यूबेटर्स। ये 29 है पूरे इंडिया में, आप इनको गूगल कर लीजिए, आपको मिलते रहेंगे। लिंक्डइन पे सब एक्टिव रहेंगे, वहां से आप इनको फॉलो करके और आप अपना वो कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट से लेके जम्मू कश्मीर से लेके Madam, these are all. जगह है। जी Excuse me, ma'am. जी जी, बताइए डॉक्टर नागरानी। हाँ जी, Sorry to बताइए। interrupt you. I just wanted to know whether these all schemes and fundings that are given to the startups are like equity based, or these are kind No, of no, I'm telling what you you again, call grant. project funds. These are grants, okay? No, These are not on grants. equity basis, no? कुछ भी नहीं, आपको कोई इक्विटी नहीं देना, आपको कोई लोन नहीं देना, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, कुछ भी पे नहीं करना। ये गवर्नमेंट की तरफ से गिव अवे है, ये मान के चलो। Got it, got it. Because So see, this is that's from why हमारा Department startup of ecosystem बना है। Biotechnology. These बायरैक are है, from बायरैक इज अ स्कीम। Biotech. हाँ Okay. हाँ, बट इवन अगर आप Means बायोटेक का स्टार्टअप है ना, वी ऑल्सो सपोर्ट बायोटेक, बायोटेक के स्टार्टअप इफ इट समहाउ एग्री बायोटेक। correct, correct. हाँ, अदरवाइज बायोटेक का अभी कॉल ओपन है, कल ही आया था It's हमारे पास। open. It's open. Yeah, it's हाँ, open. May 31st till May yes. 31st. It's there. सो आई ऑल्सो टाइप इट डाउन फॉर अदर पीपल कि बायोटेक का है, बिग बिग करके ग्रांट है, तो ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें 50 लाख तक का फंडिंग है। Is it possible for the team to share these links in the WhatsApp group so that we can have access later also in case we are not able to Yeah, take it ma'am. now? Ma'am, I have copied all the Yeah, links and yeah. the posters that Yeah. ma'am has shared with the chat. So we'll circulate that one, ma'am. Okay. Thank you so much. Yeah. और अभी Thank- रिसेंटली 3 दिन पहले बिट्स पिलानी का भी एक स्कीम आया है, विच आई थिंक निधि सपोर्ट करके, निधि प्रयास करके, बट आई विल शेयर दैट एज वेल।
कॉपी लिंक, उसमें फंडिंग 1 करोड़ तक का है, बट उसमें मैं आपको बता देती हूँ वो 2 या 3% इक्विटी लेते हैं, विच इज ऑल्सो फेयर इनफ, क्योंकि बिट्स भी बहुत अच्छा इंक्यूबेटर है। आई हैव बीन वर्किंग विद बिट्स फॉर ऑलमोस्ट लाइक 7 to 8 years। मैं उनके इवेल्युएशन पैनल में भी हूँ, सो दैट्स हाउ आई नो। बिट्स का मैं शेयर करती हूँ। सो दिस इज बिट्स का कॉल फॉर एप्लीकेशन एंड दिस इज देयर लिंक। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, इट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टार्टअप्स। किसी को स्टार्टअप करना है, आपके किसी नोन को करना है तो प्रमोट कीजिए सबको, मतलब हम तो ये सोचते हैं कि जितने लोगों का मदद हो सके अच्छा है। I'll also see अगर कोई हो रहा है तो anyway you can also I'll also share these things with Utkarsha and you can also follow us on LinkedIn। हम वहाँ पे भी पोस्ट करते रहते हैं, उधर से भी पता चल जाएगा आप लोगों को। And mostly for all these fundings, what is the basic criteria? I mean, it has to have some product in Innovation. hand, or it can be from a very scratch if we want to get in. See, there are like two kinds of funding. First is pre-seed, माने आपको सिर्फ बूटस्ट्रैप का पैसा चाहिए। तो जिसका टिकट साइज होता है, टिकट वी कॉल इट लाइक, थोड़ा जार्गन जैसा लगता है, पर टिकट साइज मतलब कितना पैसा डालेंगे हम उसमें। तो उसमें पैसा 2 लाख से 8 लाख के बीच में हो सकता है। तो उसके लिए आपका आइडिया MVP नहीं भी होगा, मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट नहीं भी होगा, बट यू हैव एन आइडिया विच इज फीजिबल, विच कैन बी कन्वर्टेड टू अ प्रोडक्ट, एनी गुड्स और सर्विस, तो उस पर हम फंड करते हैं। That is in the range of 2 to 8 lakhs. 2 to And 8 lakhs, is there हाँ। any age limitation and No, otherwise there time is no limitation? limitation। कुछ एज का नहीं है, कुछ एजुकेशन का नहीं नहीं है। है। We have startups who have never been to school and we have startups who are postdoc, तो दोनों है। We have a Correct. startup, a boy who is just 19 and we have a startup who is a retired Navy officer। Got. If एज there का is भी no कुछ नहीं है, age limitation and no nothing। You just have education to bring barrier. something innovative। समझ लो, आपको खाली Got सिर्फ it. इनोवेटिव आइडिया लेके आना है, and then you just have to reach out to any incubator। Got that. Yeah। Thank you so much. Yeah, so now I think I'll take questions। इन्होंने बोला, जितेश ने, will रफ्तार provide fund for hydroponics and roof gardening? हाँ, if you can bring something unique to the table, क्योंकि hydroponics everybody is doing, roof gardening भी everybody is doing। इसमें कुछ आप समझ रहे हो, आप इसमें कुछ प्रोसेस इनोवेशन लाके दिखा दो कि मेरे वाला हाइड्रोपोनिक्स या मेरे वाला रूफ गार्डनिंग दूसरों से अच्छा कैसा है, चाहे उसमें सिर्फ कॉस्ट कटिंग ही क्यों ना हो। We can consider it as an innovation because cost innovation, इनोवेटिव लाना है। ठीक है, नेक्स्ट आई थिंक आई टेक, क्या पूछ रहे हैं, हाउ टू टैकल फार्मर्स ट्रेडिशनल माइंडसेट। नहीं, फार्मर्स आर ग्रोइंग। फार्मर्स अगर कुछ नहीं होंगे ना तो हमारा देश ग्रो ही नहीं करेगा। फार्मर्स आर ग्रोइंग ओनली। पर हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत रूडिमेंट होते हैं, जो बहुत ऐसा होता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो ठीक है, यू कैन जस्ट skip it, just go to someone who thinks progressive। ओके, नेक्स्ट आई चेक, रजिस्ट्रेशन लिंक तो मैंने शेयर कर ही दिया है। As an incubator, what a startup should concentrate on its early stage to avoid failures and challenges in growth or later stage of startup। देखो, एक early stage startup के लिए I would say instead of burning cash on your own, go for grants first। क्योंकि शुरू का 2 साल में ना सबको ब्रेक इवन अचीव नहीं होता है, it takes time। और उसमें प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए समटाइम्स इट टेक्स अराउंड 2 to 3 years। किसी किसी को 1 साल में भी प्रॉफिट आने लगता है, बट एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप के लिए आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि इतनी सारी गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं, नॉट जस्ट गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं, बहुत सारी सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, बहुत सारी फिलेंथ्रोपी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि हेल्प करती हैं स्टार्टअप्स को थ्रू ग्रांट्स। तो ऑलवेज लुक फॉर ग्रांट्स फर्स्ट, ताकि आप एक बेस बना पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा आपको शुरू में पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज रेंट आउट दोस थिंग्स, यू कैन ऑलवेज रेंट आउट मशीनरी, यू कैन ऑलवेज रेंट आउट एन ऑफिस और समथिंग। ठीक है, धीरे धीरे जब पैर जमने लगेगा ना, देन यू स्टार्ट फॉर इन्वेस्टिंग, कि पैसा लगाना है, उसके लिए फंड रेज करना है, देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट। सो आई वुड रेकमेंड कि एक बार ग्रांट्स एक्सप्लोर करो, 2-3 साल ग्रांट्स अच्छे से उसको यूटिलाइज करो, एंड देन यू विल मेक सम मनी, देन इन्वेस्ट दैट मनी। अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ ना, कि अपने को बिजनेसमैन के जैसा सोचना चाहिए कि अपने को नया पैसा जो हम कमा रहे हैं ना, जो इस बिजनेस से कमा रहे हैं, वो इस बिजनेस में लगाएंगे, वो अलग बात है, वो इन फ्यूचर लगाएंगे। पर ये पहला बिजनेस मुझे पैसा तो दे। तो अगर मैं ऑलरेडी, मेरा जिंदगी भर का कमाई ऑलरेडी मैं इसमें लगाने लग जाऊंगा स्टार्टअप में, सो हाउ विल इट फंक्शन। तो जस्ट टू बी
attainable to profit situation, let's use these grants. You can do that. Or you can even keep a mix of it. कि सारा ग्रांट पे बेस्ड भी नहीं हो सकता, थोड़ा सा पैसा खुद का, थोड़ा सा पैसा ग्रांट का. Then you can do that. और अभी तो ये बहुत सारे कोलेटरल फ्री लोन्स गवर्नमेंट के ये बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स भी देने लगे हैं. अभी ये स्टार्टअप के नाम पे बहुत अच्छा पॉलिसीज भी आ गया है. सो यू कैन डू दैट एज वेल. ओके, आगे देखते हो. मैं क्वेश्चन किसी का है, लास्ट में चलते हैं. ओके, डू रफ्तार गिव फंडिंग फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो? I'm not able to understand your question. Can you just speak, Avinash Chauhan? हाँ, स्लाइड्स में जिसमें से जो आपके काम की स्लाइड्स, I'll share that. I'll share with Utkarsh. Then you will get it. वाटर टैंक में इंट्रोड्यूस क्या करना चाह रहे हैं आप? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में एज प्रोजेक्ट्स अगर आप पूछ रहे हैं तो आई थिंक रफ्तार में बहुत, इट्स लाइक अ वेरी मैसिव अम्ब्रेला. यू कैन चेक, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा सर. और ये वाटर टैंक पे जो आप पूछ रहे हैं अमनदीप जी, वो क्या है, कुछ अपना बताएंगे, आइडिया क्या है ये? देन मे बी इट कैन बी एक्सप्लोर्ड. हेलो मैम. हाँ जी, बाला साहिब जी बताइए. ये स्टार्टअप में जो इनोवेटिव आइडियाज के बारे में जब हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम में जब अप्लाई करते हैं तो उसमें मैंने ऐसा देखा है कि आपकी जो इनोवेटिव आइडियाज है उसका फॉर्म फिलअप करके लेते हैं. ठीक है. और उसमें क्या होता है कि उतनी इतनी लंबी उसमें क्वेश्चनरीज होती है. तो उसमें वो हमारा पूरा का पूरा इनोवेटिव आइडियाज उसमें वो निकाल लेते हैं. तो फिर हम उसका क्या बोलते हैं वो सस्पेंस या उसका जो इनोवेटिव एक्शन है वो नहीं रह जाता. तो इसके लिए ऐसा कुछ इन स्कीम में ऐसा कुछ है क्या कि वह हम ओरली सिर्फ हमारा ओरिएंटेशन ओनली बताएंगे कि वह हमें ऐसा ऐसा करना है, वो हमारा इनोवेटिव आइडियाज हमारे पास उसकी है. जैसा मैं एग्जांपल तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ. अभी इंडिया में जो है, आपने अभी अभी भी थोड़े आपके स्पीच में बताया कि कभी रेनफॉल ज्यादा होता है, कभी रेनफॉल कम होता है, लेकिन मेजॉरिटी जो इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन द rainfall. All the crops depends upon the rainfall in the Kharif season, major, and the moisture content in the soil. The rabi crops are grown. इसमें जो है अभी हम देख रहे हैं, पहले मैंने 10 साल के पहले एमपी में गया था तो नर्मदा नदी पूरी के पूरे उसका अभी तक एक बार भी उसका डेप्थ मालूम नहीं हुआ था, लेकिन ये साल में वो पूरा ड्राई हो गई. यानी कि पूरे इंडिया में वाटर रिसोर्सेस कम हो चुके हैं और रेनफॉल अनइवन हुआ है. वो कभी गिरता है कभी नहीं गिरता, उसके स्केर्सिटी होते हैं, उसमें रेंज में गैप्स पड़ जाते हैं. तो हम ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकते, जो मैं उस पे अभी काम कर रहा हूँ, कि हम प्लांट रूट लेवल पे ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर बढ़ाएंगे तो क्रॉप्स को इन वापसा कंडीशन, तो क्रॉप्स को जब रेनफॉल होगा वो वाटर होल्डिंग करके रख देंगे, और जब रेनफॉल नहीं होगा और जब उनको पानी की जरूरत पड़ेगी तब वो स्टोर्ड वाटर रूट्स अवेलेबल कर देंगे. ओके. इसके बारे में मैं ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में भी काम कर रहा हूँ. ओके. यस. तो ऐसे जो आइडियाज है, जब ये हम ग्रांट लेने की बात करते हैं तो उस वक्त उसमें ये सब जानकारी वो पहले से हमसे निकाल के लेते हैं और बाद में वो ग्रांट तक पहुंचने भी नहीं देते. ऐसा हो जाता है और हमारी आइडियाज जो है वहीं पे वो ओपन हो जाती है. ऐसा. अच्छा, सी हमारे जितने इंक्यूबेटर्स है ना सर, वी साइन एन एनडीए फर्स्ट ऑफ ऑल विद द स्टार्टअप कि आपका जो आइडिया है इट विल बी सेफ विद अस. अगर वो कहीं से भी लीक होता है तो यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट अस. तो हम तो ये मेक श्योर करके रहते हैं कि सो दैट आपका ये वायोलेशन ऑफ योर ओन आईपी राइट्स वो ना हो जाए. वो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर तो करते हैं. आई डोंट नो अभी अगर कुछ लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो दैट इज लाइक इलीगल. ये सबको करना चाहिए. दूसरी बात, आई वुड ऑल्सो से
आपका जो मुझे आइडिया लग रहा है ना सर, आईआईटी रोपड़ का एक इंक्यूबेटर है अवध करके, AWADH। आई एम गोइंग टू टाइप इट हियर, AWADH। रोपड़ इज इन पंजाब, आईआईटी रोपड़। ये लोग आपको आई थिंक फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर पाएंगे, बिकॉज डीएसटी का सबसे बड़ा फंड वाटर रिसोर्सेज स्टार्टअप्स का इनके पास है इंडिया में। और डॉक्टर राधिका त्रिखा इज देयर COO। आप उनसे बात कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर उनका नंबर भी आपको चाहिए तो आई कैन शेयर विद, मैं यहाँ नहीं लिखूंगी क्योंकि दैट विल क्रिएट अ ट्रबल फॉर हर कोई उनको पता नहीं कॉल करने लग जाएगा। तो आई शेयर विद उत्कर्ष और आई शेयर विद प्रीति, तो शी कैन शेयर विद यू। आई जस्ट टाइप इट टू यू एज वेल। तो ये उनकी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उनसे आप बात कर लीजिए मेरा नाम लेके, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन योर आइडिया टू हर, एंड देन शी कैन अकोमोडेट, वो देख लेंगी। और उनके पास वाटर का डीएसटी का काफी पैसा है, लिंक्डइन पे उनको ऐड भी कर लेना आप। दूसरा एक काम मेरा जो चल रहा है, तो उसमें जो है, जो हमने देखा है वीड्स कंट्रोल के लिए, अभी ये बहुत सारे वीडिसाइड्स आए हैं। राइट प्री इमरजेंस है, पोस्ट इमरजेंस है, राइट और मैकेनिकली भी वी कंट्रोल इट। ओके बट अभी तक ऐसा कुछ वीडिसाइड बना नहीं जो कि बायोलॉजिकली मेड है। यस I am doing work on making biological weedicide also, which acts as a pre-emergence weedicide. तो इसमें तो आईपी भी बनती है, हम इसको प्रोटेक्ट भी करा सकते हैं। तो ये जो जानकारी जो है, इसके बारे में हमें कुछ उतनी जानकारी नहीं, तो उसका स्टार्टअप करने के लिए किसके साथ जुड़ जाए और कैसा काम करे, इसमें अगर कुछ बता सकते हैं तो बताइए, वीडी साइड जो में। हमें इसके बारे में हेल्प करे, हमें हमारा स्टार्टअप बढ़ने के लिए। हाँ, आई थिंक इंस्टीट्यूट ऑफ वीड टेक्निकली रिसर्च अपना कहाँ पे है मुझे भी ध्यान नहीं। आईसीआर का इंस्टीट्यूट है वीड का, एक सेकंड, आई एम आल्सो गूगलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ वीड रिसर्च। वीड साइंस का इंस्टीट्यूट भी है, आईसीआर का इंस्टीट्यूट। जबलपुर मैम, अच्छा डायरेक्टरेट ऑफ जबलपुर वीड में ना। रिसर्च। हाँ तो आप वहाँ पे आईसीआर, हाँ DWR है ना, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च। आप उधर सर, आपको अगर जाने का मौका मिले, अदरवाइज उनको आप रीच आउट कर लीजिए किसी भी तरह से। यस, दे हैव वेरी, मतलब ये तो सबसे प्रोमिनेंट इंडिया का इंस्टीट्यूशन है जो वीड पे काम कर रहा है। वहां पे उनके पास रिसर्च का पैसा भी होगा, और इनफैक्ट दे विल ऑल्सो टेल यू कि क्या पता उनका इंक्यूबेशन सेंटर भी हो, बिकॉज आई एम नॉट रियली अवेयर अबाउट इट, बट यस यू कैन एक्सप्लोर दैट एज वेल। अदरवाइज बाकी के आपके रीजन में जो भी रफ्तार का अगर इंक्यूबेटर है ना, वहां पे भी आप जा सकते हैं। और नहीं तो जबलपुर में अपना JNKVV यूनिवर्सिटी है, उसका जबलपुर में उसी का रफ्तार इंक्यूबेटर JNKVV में, दे कैन कनेक्ट यू टू DWR। आप इनके पास जाइए, इनके पास खुद को इंक्यूबेट कीजिए, दे हैव फंडिंग एज वेल। ये आपको DWR से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आई शेयर, वेट मैं आपके साथ ना ये दोनों ही नंबर शेयर करती हूँ। आप एक काम करो, आई एम गोइंग टू, आई हैव शेयर्ड माय नंबर विद यू। आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे हाय भेज देना, ठीक है? यस यस फिर मैं यस आपको ये दोनों नंबर शेयर कर दूंगी। जबलपुर की मैनेजर रफ्तार की है, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम। मैम। या सो यू कैन डू दैट। मैडम योर नंबर इज 94 नहीं ट्रिपल नहीं, इधर सिक्स। नहीं बोलिए, इधर नहीं बोलिए, लिख दिया मैंने, सही लिखा है। अच्छा अच्छा, ओके, यस यस यस। थैंक यू मैम। हाँ ठीक है, तो आप एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे हाय भेज देना, फिर मैं आपको जबलपुर वाले जो मैडम है उनका नंबर भी और डॉक्टर राधिका का नंबर भी भेज दूंगी। देखो ट्राई यस करने से बात बनती है, आप एक बार एटलीस्ट इनसे बात तो कीजिए, क्या पता काम बन ही। यस 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 मैम, यस। है ना, हम ट्राई करेंगे तो वो ये ना, बात करने से बात बनेगी। एक बार जस्ट रीच आउट टू देम एंड लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। अदरवाइज अगर नहीं भी हेल्प होती है तो यू हैव माय नंबर, सो लेट्स सी कहीं और आपको कनेक्ट करेंगे। यस यस मैम, यस। राइट सर क्या फार्मर है या लाइक प्रोफेसर है? मैडम आई एम BSc एग्रीकल्चर फार्मर, पास आउट इन 1991, MP की महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राहुरी, महाराष्ट्र, and doing agriculture work since तो आप ये 1991 in सिरकोट वाला भी agriculture, देख लो ना, and सिरकोट I का am भी, an entrepreneur. सिरकोट वाला भी आप एक्सप्लोर कर लो, उनका तो अभी स्कीम ओपन भी है, इफ यू आर बेस्ड इन महाराष्ट्र। किसका? मैंने शेयर किया था अभी थोड़ी देर पहले। which मैडम? सिरकोट, सिरकोट।
और डीएसटी का भी है जो ओपन रहता है, वो भी ट्राई कर सकते हैं ना, वो जो आपने अभी हाँ, they बताया can था do that. वो, हाँ Yeah, वो yeah, yeah, yeah. सोशियो इकोनॉमिक में अगर वो आई थिंक फीमेल वुमेन्स के लिए है या क्या है, वो चेक करना पड़ेगा वो। या सो सर आप देख लीजिए, बन जाएगी आपकी बात कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना अगर आप बोल रहे हैं जैसे कि वो उस तरह से बायो तरीके से वेल्ड का कुछ है ही नहीं, तो ये तो बहुत इनोवेटिव आइडिया हो सकता है। Can be आपने वो something- रिसर्च करके अगर किया है, साइंटिफिक प्रूफ्स हैं, तो नेचुरली हाँ, लाइक नो होल और इनफैक्ट कम्युनिटी इसका ऑफ, टेस्टिंग वैलिडेशन में भी हाँ पता है, I'll also tell you, इस जो भी आइडिया अगर लेके भी आ रहे हैं उसका टेस्टिंग वैलिडेशन में भी इंक्यूबेशन सेंटर हेल्प करते हैं। यू नो द एग्जैक्टली। थिंग्स दैट ही इज क्लेमिंग, वी कैन गेट इट वैलिडेटेड एज वेल। Okay, ma'am. And yeah, what you said is right. He can connect with all these what you call startup support groups where you know Yes. the people can mentor and guide him. या फॉर श्योर फॉर श्योर। ठीक है बाला साहब जी, आप कर लीजिए और बनेगा इसमें कुछ ना कुछ अच्छा। अच्छा मैडम, थैंक यू मैडम। जी जी, वी आर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट स्टार्टअप्स, हम लोग तो यही, हमारा तो काम ही है। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस इफ एनीबडी हैज? Ma'am, we'll just share your LinkedIn, maybe like the You can do that. You can do that. Yes. yeah. So if anybody wants to connect to you, so they can connect to you at the LinkedIn, ma'am. Yes, they So can. share that one. Yeah. Okay. And Yeah, all yeah. the dear participants, whatever like ma'am has shared all the details of these startups, programs, and these funding agencies, whatever is there, I have copied. So I will just ask Utkarsha ma'am to share in the group as well. So ma'am. Okay. Right. Works for me. Yeah. Yeah, ma'am. So, ma'am, I think there are no more questions, and since we have some time bound, limitations as well. So For sure, I for sure, would ma'am. just say one thing, like ma'am, I think every participant will agree. Ma'am, 1 घंटे में कोई कितना कुछ share कर सकता है. So you have shared that much with us, and actually I think it is one of the most worth 1 hour session that we had ever since, like in the digital platform. So it was Oh so my God, wonderful to Ricky. listen to you. That Yeah, is too it was kind so of wonderful. you. We are just trying to do our duties. Yeah. No, actually, I was also noting down certain things. I was also just, looking at you, how you're speaking, what you're speaking, and it was so fruitful. It was so fruitful in a 1 hour to listen to you, ma'am. So we are very grateful to you to have you with us now. Thank you so much. Thank you so much if you feel that way. And then thank you everyone. And yes, you can connect to me anytime on LinkedIn. I go by Money M if you search. And I think you will share the link. And yeah, I'll be happy to help any one of you. Yes, ma'am. Yeah, so we'll share your LinkedIn profile, the connection with them. So if they want to connect to you, they can connect, ma'am. And ma'am, in the chat box also, you can see there are so many, the people are saying it was super, ma'am. It was very informative. So thank you once again, ma'am, for joining with us. Thank you, Preeti, for having me. It's always a pleasure. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, one and all. Have a great evening. So dear participants, this is all for today. We'll call it a day, and we'll meet again tomorrow with the new sessions for tomorrow. So till then, have a great day, and thank you so much. We'll share all the details in the group, and that will be circulated to you. So thank you so much.